गुड मॉर्निंग मैम, फ्रॉम टीटीसी जोधपुर। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी देखो। या मैम, नाउ इट्स ओके। थैंक यू, थैंक यू। Now it is. यस मैम, यस मैम। Okay. So you can read a quote: when the trust account is high, communication is easy, instant, and effective. This is equally true in case of management, and it is equally true in case of teaching learning process, where the teacher has a trust on the student or students have trust on the teachers. The communication is straight, open, and effective. So in this session, I'm going to focus on communication in classrooms, and the purpose of classroom communication is twofold. One, to build rapport with the students. Another one is to achieve the instructional objectives. So whatever topic you have in mind or you are going to teach in the class, you would like to achieve the instructional objective. That means what a student will be able to do at the end of instruction. So in the light of this, I am going to focus only, when we say communication, 4 skills are required. What are those 4 skills? What are those 4 skills? Now, communication skills. Communication skills, oral, verbal and non-verbal. Okay. Any other way of classifying? Written. Okay. Body language. Body language. Communication की कौन सी 4 skills हैं? Reading, writing, speaking. Reading, writing, speaking, and listening. And when I say oral communication, They are sub skills. If you have asked us to name the sub skills. आप इसको sub skills भी कह सकते हो. They are considered as a major 4 skills in the area of 4 skills. So when I say oral communication skills, 2 of the skills come under oral communication. What are those? What are those? Speaking and listening. So in this particular session, I am going to focus on these 2 skills rather than on the 4, that is inclusive of reading and writing. So the structure of my presentation will be dealing with 2 major aspects: principles of effective speaking and principles of effective listening. Now this is a phenomena which is experienced each day by each one of us, and we spend almost 80% of our time on communication. So many of us think that we have perfect communication skills, but very few of us are really effective communicators. But you all have, over the period of time, gathered many principles of effective communication. So may I know from the audience, what is it that constitute effective speaking? Yes. First, I'll start from Nitter. Give me the points. Which speaking you would rate as effective? What is it that constitute effective speaking? Okay. Content should be very clear. Content clarity. Okay. Well spoken. वो well spoken के क्या features हैं? Audibility. Okay. Pronunciation. Okay. Okay. वही पूछ रही हूँ. Yes. Okay. Modulation of voice. Okay. May I shift my focus to TTC Jodhpur? Anybody would like to point out what is it that constitutes effective speaking? Yes, TTC Jodhpur. क्यों तुसी जी TTC Jodhpur. Any participant would like to say what is effective speaking?
टीटीसी जोधपुर बोलो क्या हो गया everybody is looking to each other's face हाँ जी ये होने तो ठीक है किसी नहीं आपकी इको क्यों जा रही है अभी तो नहीं चल रही थी ना इको नहीं जा रही टीटीसी जोधपुर अभी बोलिए May I request GP Sampla to reply to the question? GP Sampla. Yes, please. हाँ जी. What is grammatical knowledge? Okay, grammatical knowledge. Any other participant would like to point out any other feature? Effective pronunciation. Okay. Content and brief knowledge of the topic. Okay, pre-planning of the topic. May I request now the Lingyas Institute if you have certain points to add? The speed should be proper. It should neither be very fast nor be very slow. Plus, the vocabulary that we use to deliver a lecture should be understandable by the students. Okay, thank you so much. Any other member would like to add to it? Add to it? Any additional point? I think you have given me a number of good points, but let's go systematically and deal with principles of effective speaking. People speak with the vocal organs but communicate with the whole body. Now, when I am speaking, it is not only the words which are being interpreted, but my facial expression, my gestures, my body movements, everything together you try to decode and derive the meaning out of that communication. And thus, effective communication, when we say, it has three broad parameters. The effectiveness depends upon the verbal communication. The effect is only 7%. The words which you use to communicate to others, it has impact on effectiveness up to 7%. The tonal quality, the tone of the voice, has an impact up to 38%. Now just listen to me. I am going to speak one sentence twice. A student is entering your office and the person says, "Good morning," and you are now responding to the student. "Good morning, have a seat." "Good morning, have a seat." अंतर है? क्या लगा आपको? पहला सेंटेंस क्या था? Soft, welcoming, courteous, and second क्या लगा आपको? Demanding, authority यूज कर रहे हो आप. So same words, but your tonal quality when was changed, the whole meaning of the sentence has changed. So the very first sentence, the student will be happy, would like to occupy a seat, but if you speak the second way, then student may like to leave the room rather than occupying a seat. Come to the one, non-verbal behavior. Non-verbal behavior has an impact on effectiveness up to the extent of 55%. Now just observe me. Two of us have gone for a job interview. You get selected, I get rejected. But tomorrow morning we are going to meet because we are colleagues and I'm going to congratulate you. See, how do I do that? Congratulations, you got selected. The other way is, congratulations, you got selected. Is there a difference? What difference? The non-verbal component. What is, whether it matched the words or whether there was a mismatch between the words and the non-verbal behavior. Bolo? In the formal, you are surprised. You are just asking that
as if you never expected. Yes. So my non-verbal, the burrows on my forehead, they indicated that I'm not happy that you got selected. But when your face was smiling, your non-verbal behavior matched the words congratulations, then the happiness was there. So the whole effect on the person is of the non-verbal rather than the words which are used. आप जान जाते हो कि ये बंदा दिल से खुश है या नहीं खुश है, या ऊपर से दिखावा दिखाई दे रहा है. So, but हाँ, वो हंसना भी बहुत तरीके से होता है. So one is a genuine smile, another is which smile? Mischievous smile. So once you do that, that means you are actually criticizing or laughing at a person rather than appreciating the person. Julius Caesar in Shakespeare's play, one may smile and still be irrelevant. So when you talk about communication, verbal content is only the tip of the iceberg. The remaining iceberg is non-verbal communication. And as a teacher, when we interact with our students, we have to pay attention to both verbal and non-verbal behavior. And here, when we start with the principles of effective communication, anybody would like to have a class which is like this, which is very lively, entertaining, students are able to participate, rather than having a class where the students are sleeping, they are bored, and they are simply attentively listening. So if we have to create that kind of environment in the classroom, we have to abide by some of the principles of effective speaking. The very first principle of effective speaking is know thy subject. When I say know thy subject means the topic at hand. The person should have adequate mastery over the subject matter. And we are living in information age and a knowledge economy where changes are taking place in the knowledge. And there are new concepts, new principles, new theories which get integrated into the discipline. So a teacher needs to always remain current or updated in the discipline which he has the specialization. And if I don't have the mastery over the topic, then what is going to happen? What will happen if the teacher lacks the knowledge of the subject matter? Over to the audience. Anybody from Lingyas or GP? You would like to answer the question? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ any variation नहीं होती ना? Ma'am, if जी, please continue. Ma'am, if the teacher doesn't have knowledge about the topic that he is to talk about, there will be two outcomes. Either he'll just go round and round. He won't address the topic. Okay. And second, he can just accept that I'm not ready for this topic. He can move on to some other topic. He can say that yes, I'm not familiar with this topic. I'll take it at a later stage. Okay. But he shouldn't stop the class. And if I think this is a better option rather than कि आप उसको घुमाते रहो students. हाँ, that's very true. घुमाते रहने से तो अच्छा है कि दूसरा topic पढ़ा दो. Thank you so much. But when I say know thy subject, the person who lacks the knowledge in the subject matter would not be able to adequately explain the concepts and principles, will not be able to relate the topic to other topics, will not be able to give suitable or appropriate examples to the students. Thus, it is very essential for effective communication that the person have mastery over the subject matter which he is going to deal with. He will not be able to deal with the queries also. Second is know thy objectives. Because when we are in the classroom situation, we are not there to simply pass on the information to our student.
We would like to bring certain changes in the behavior of the individual in terms of knowledge, in terms of skills, in terms of attitudes. And that is possible if I, in the beginning, know what exactly a student is expected to do at the end of instruction. Now, for example, if I know that I am going to teach differential equation, at the end, I expect the student will be able to solve the differential equations, then my methodology would be dependent upon the objective. This means, as a teacher, I need to demonstrate how to solve differential equation. I need to give adequate practice to my students so that they are able to solve the differential equation at the end of instruction. If I don't give adequate practice, they'll not be able to solve the differential equation. Or say, for example, I want to show them the relationship between stress and strain. So I expect my student to derive the relationship between stress and strain. Now, if I know this is what I expect, that means I can show a graphical representation to my student where stress is increasing and there is proportionate increase in the strain. And they can interpret the graph and ultimately they'll be able to derive the relationship between stress and strain. So your methodology which you adopt in providing the information depends upon the instructional objectives. And even the assessment, how you are going to evaluate the student performance, is dependent upon the instructional objective. So a teacher need not only have the subject matter knowledge, but he should also be familiar with what is expected of the student at the end of instruction. The third very important principle which you have not given me is know thy audience. Because a good teacher, as yesterday we discussed, is the one who can come to the level of the learner. And you can come to the level of the learner only when you have adequate knowledge about the learner. If you know what is the age of my student, in which class he is, whether he is a first year student, whether he is a second year student, whether he is a final year student, do you think it matters? How? As a teacher, we must analyze the audience who are going to listen to us. Yes. We must come up to their level if need be. Need be nahi, you have to come to the level of the learner. Need भी तो need ही है, वो तो रखना ही है, उसके level पे आके ही. My question was, if you are dealing with students of first year, second year and final year, would it make difference? Yes. Why and how? Because their level of receptivity, understanding, the way Varies. we can establish rapport with them, they vary. They vary. So naturally we will have to So, attune ourselves. fine. The same topic, if it is taught to be first year, then the student doesn't have any prerequisite knowledge in that subject if I am teaching electrical engineering. But the person who is in a final year has adequate knowledge in electrical engineering in first year, second year, and now you can cross question that student and test prerequisite knowledge and relate the new information to his previous knowledge. So your approach to dealing with the subject would differ if you are familiar with whether they are first year, second year, final year students. It also matters what is the level of interest of my student in that topic. If the student is interested in the topic, your job becomes simpler. But if the student is not interested in the topic which is at hand, the task of the teacher becomes difficult. You need to arouse the necessary level of interest among your students. How you can create interest? How you can create interest? Yes, the question is how you can create interest among students who are disinterested or not interested in the topic with which you are dealing in the class.
Over to the audience. GP Sampla, anybody would like to reply? क्या हो गया? ये पहले भी नहीं बोलते. Yes. Hello. Can I get a reply from Government Polytechnic Sampla? Ma'am, I think we can inculcate interest in students regarding the subject in which they are not much interested by relating the subject more to real life experiences. Okay, very good, absolutely right. Another point. Practical examples. Okay. Lingyas Institute, would you like to add to this point? अगर आपको स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिपेंड्स कि स्टूडेंट जो है वो हमारा कौन से ईयर को हम पढ़ा रहे हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का माइंडसेट अलग होगा, सेकंड ईयर का अलग होता है, थर्ड ईयर का अलग होता है, फाइनल ईयर तो आप जानते ही हो. तो बताओ कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करें. फर्स्ट ईयर है, they have just passed their 12th and they have come to the engineering college. For example, if there is a CS student, फर्स्ट ईयर में उसको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. He needs to go through basics of mechanical, basics of electronics, basics of electrical. अगर being from a mechanical background, I'll have to teach him basics of mechanical engineering. So he'll say that what is the use of this? So it depends कि हम किस तरीके से relate करते हैं. For example, how I will relate it to it. Normally, students are fond of cartoons. So I'll say that there is a fight between Tom and Jerry. Jerry will just try to pluck the mustache of Tom, and he'll just grab all the hairs from his mustache and pull it. Once the first hair breaks, then all of the breaks suddenly. Fine. So that way we can create interest. Thank you very much. I think you have given few points to me. If we have to create interest among the students, then the first thing is if you start with how this topic is relevant to day-to-day life, how this topic is relevant to the industry which the student is going to join at the end of the program. You can relate the topic to the real life experiences and real life examples. You can also tell the worth of the topic by studying this particular topic, what a student will be able to do. You can also involve your students in the development of lesson. That itself will create interest among the students. You can generate discussion in the classroom. That will also create interest among the students. You can have an activity. You can use a multimedia. You can show a video clip to arouse the interest among your students. Then the third factor which is important is the learning style. What do you understand by this term, learning style? Hanji. Learning style of the students. Actually, the style depends upon the individual. मैंने ये नहीं पूछा सर. What is style? Depend किस पे करता है उसको भी छोड़ लेते हैं. But what is a style? Learning style. जी. क्या होता है learning style? जी मैम. स्टूडेंट्स है जो ज्यादा एग्जांपल्स देके जब उनको बताए तो गेट करते हैं किसी चीज को. कुछ लोगों को किसी पिक्चराइजेशन से रिलेट करके Okay. Okay, thank you very much. Now when we talk about learning style, learning styles are preferred ways and means of learning. What is the preferred way of learning a particular thing? There are students who listen to the things and they learn. They are referred to as auditory learners. There are other students, when they see the things, you show them a picture, you give a demonstration, you show them the media clip, they will be able to learn. They are referred to as visual learners. Then there is third category of learners. They learn when they are able to do certain things.
They are referred to as kinesthetic learners. So there are 3 types of learners in your class, and as a teacher, if you are able to cater to the needs of different types of learning styles, then you remain effective. Now, if I am speaking only, I am catering to the needs of auditory learners. When I supplement my oration with the picture, diagram, chart, clip, multimedia, or simulation or animation, I'm trying to satisfy the visual learner. But when I give them activities, when I give them tasks, when I involve them in group discussion, when I ask them to perform certain tasks, then I am catering to the needs of kinesthetic learners. So as a teacher, you need to cater to the different learning styles which are existing within the class, and you need to identify who are the students who are auditory learners, who are the students who are visual learners, and who are the students who are kinesthetic learners. What do you understand by this term previous attainments? क्या होती है? उसकी past जो experience है, knowledge, skills, learning कितनी है, so that you can relate the new information to what a student already knows. Meaningful learning takes place when you try to build a relationship between what a student already knows and what you are going to teach. So it is important for a teacher to have some knowledge of what the students already know, or what skills they already possess, and what kind of attitudes they bring to the class. If there are certain misconceptions, those misconceptions need to be rectified or corrected by the teacher. Then social context. Now this is also very important. A teacher must try to find out who are the students who are from urban area, who are from rural area, who belong to minor cities, who belong to cosmopolitan cities. Because when you're dealing with a subject, if you can pick up examples from different contexts, some examples from rural areas, some examples from urban area, some examples from cosmopolitan cities. If you have a gender difference in the class, you have boys and girls. So some of the activities which boys get involved, some of the activities where the girls get involved, if you can relate your topic to those activities, then they become relevant. So try to gather information about your audience as much as you can. And this you can do by reviewing their application performer, by looking looking to the records, talking to the person, talking to the friends of that individual who are there, observing the individual formally and informally in classroom situation. So a teacher must have adequate knowledge of the audience, that is the learners. Then you remain effective. Then a teacher, somebody said pre-planning for the class. Pre-planning would include organization of the message. I have written topical organization, chronological organization, journalistic organization, concept maps, etc. My question to the audience is, what do you understand by these terms? What is topical organization? What is chronological organization? What is journalistic organization? Anybody who can respond to this? Yes? Anyone? जी, topical organization क्या होती है? GP Sampler, anybody would like to reply? TTC Jodhpur, TTC Jodhpur, जी, topical organization किसको कहते हैं? No answers? Okay, over to Lingyas.
कुछ आइडिया है टॉपिकल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? Anybody from the audience here, Nitter? Okay. आप कुछ ठीक हो. When we say topical organization, the topic is broken down into headings and subheadings. Now, for example, if I'm going to deal with communication in management, I say first I'll deal with the concept of communication, then I'll go to the process of communication, then I'll go to the principles of or types of communication, then I'll go to the principles of effective communication. Madam, it should have been topic of organization. No, it is referred as topical organization. कोई बात नहीं, but the technical term is topical organization. So most of us as teachers try to arrange the topic into headings and subheadings. That is what is the normal way of organizing the message. But there's another pattern called chronological organization. क्या होती है chronological organization? According to time, the events Time. are Thank you. So chronology refers to the timeline. If I'm dealing with history of computers, I say what was the status of computer in 1980s, then 1990s, then 2000, then 2020, and what will be the status of computers in 2040 or above. Or I'm dealing with economic growth of the country, then I'm starting with what was the status in 1947, maybe then 57, 67, then 77, 87, 97, 2007 and 2014 and so on. So you are following a timeline. So whenever you are dealing with factual information over a period of time, it is important that you organize your message on a timeline. So that is referred to as chronological organization. How many of you read newspaper? पढ़ते हो. एक particular news item किन questions के answer देती है? What kind of questions are answered by one particular news item? Yes? कोई बोलना चाहेगा from TTC? जी, अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें न्यूज़ होती है, न्यूज़ किन क्वेश्चंस के आंसर आपको देती है? क्या हो गया TTC जोधपुर? No one is trying to reply. No answers. GP Sampla would like to answer this question. GP Sampla करो दीपिका. सर आज पार्टिसिपेंट आपके हैं या नहीं है? Yes ma'am, we are here. जी, तो जब आप एक न्यूज आइटम पढ़ते हो तो किन क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते हैं? It answers the date, place and what happened. Okay, thank you very much. When we read a newspaper, any item would answer what happened, where it happened, when it happened, why it happened, who was involved in it, how it happened, what were the consequences of that, how that consequences could be controlled or eliminated. As यही होता है. So, can we use this organization for teaching some of the subjects? बताओ. It may help, but actually we may start that what is the genesis, development, fallout, and the rectifying steps they have been used along with all these points. Okay, I thank you very much. I would say you can utilize this. So, for example, say there has been earthquake, there has been flood. Now you have recently experienced that in J&K. There was devastation which took place in Uttarakhand. There was earthquake in Ahmedabad, Latur. You had seen what happened in Nepal. If I have to narrate that incident to my student, it is always better to organize it in a journalistic organization.
what happened, where it happened, when it happened, why it happened. So you select events which relate to your subject and try to use the journalistic organization. Concept maps show the relationship between the various concepts which are to be taught in a particular topic. So you can break the topic into the concepts and show the relationship. Then it is always good if we try to organize the message from simple to complex, easy to difficult. जो आसान चीज है, सिंपल चीज है, उसको पहले पढ़ाएं, जो मुश्किल है उसको बाद में पढ़ाएं. Known to unknown. The students, if they are familiar with a part of that, that should be dealt first, and then the student should be taken to unknown. जो पहले से जानता उसको पहले लेके आइए, जो नहीं जानता उसको बाद में लेके आइए. Concrete to abstract. Can you give me example of concrete concept and abstract concept? Yes. Concrete क्या होता है और abstract क्या होता है? Yes. The audience, can I know the difference between concrete and abstract? कोई बोलना चाहेगा? What is the difference between concrete concept and an abstract concept? Yes, ma'am. Ji. Concrete means the deep knowledge of the subject or topic, and abstract means the overview of something. I think you need to re-examine, ma'am. We have another answer from audience here. Hanji sir. Complete, which can be proved, which can be shown in action. For example, the three armed forces of India, if they work in unison and fight the enemy and win the war, that is a complete example that there was unity and coordination. That's an example of unity and coordination. But when I say concrete concept, he has used the word which can be shown, which can be referred to, which has a tangible referent. Now, for example, in this particular room where you are sitting, I am teaching a civil engineering, and I say this is a wall, this is a roof, this is a floor. If there is a beam, there is a column I can show. If there is a beam, I can point out. These are concrete concepts. But when I say reinforce, reinforcement, that is an abstract concept. When I say stress, it is an abstract concept which needs a definition. When I talk about the stress, it is also abstract concept which needs to be defined. Or when I say in mechanical, I say engine. Engine is a concrete concept I can show. I say gearbox. I can show gearbox. I say this is a clutch. I can show that. But when I talk in terms of, bolo, mechanical ka koi term which needs to be defined. Energy. Energy. Fine. That is a defined concept. When you say power, it's a defined concept. When you say efficiency, it is a defined concept. When you say effectiveness, it is a defined concept. When you say productivity, it is a defined concept. So, when I'm dealing with a subject, my attempt should be, I first deal with concrete things in that topic, then I deal with the abstract and defined things. Observation to reasoning. Your communication remains effective if you move from observation to reasoning. Can you give me one example? How this can be utilized in classroom situation? So many things they are used to shown to the students. Circle lines. Okay. And when they are used to prove a point in an abstract or reasoning way, that becomes reasoning. नहीं, मैं ये बोल रही हूँ ऑब्जर्वेशन पहले प्रोवाइड करनी चाहिए, फिर रीजनिंग के उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए. हाउ दिस कैन बी यूज्ड इन क्लास? हाँ जी, हाँ. तुम बता सकते हो कि जब इतने टेम्परेचर पे प्लेस वाटर इन फ्रीजर चेंज टू आइस.
Why? So that means इस केस में आप क्या करेंगे कि पहले पानी का बॉल लेंगे, टेम्परेचर सेट करेंगे, पानी को फ्रीजर में रख देंगे. After few hours, you'll bring out that water, and the person can see that the state of the water has changed. Now you pose a question, why it has changed. Essay, that is reasoning. So first allow the student to observe a phenomena, then pose questions on how and why. Likewise, say for example, I'm throwing two balls from a height of 50 meters. One ball mass is 50, another ball the mass is 100. Which ball will come faster to the ground? So I'll first demonstrate that, and then I'll say why it has happened. So this is observation to reasoning. Always try to keep your communication simple and short. कहते हैं कि there is no need to elaborate if you can say the same thing in fewer words. So brevity is the principle of effective communication. Then use simple language. I am here not to impress anybody by my command on the language. My purpose is to facilitate learning among the students. So I need to use very simple words which are comprehensible to the learners, and this point you have already given to me, so no need to elaborate upon this. Somebody said the teacher must have the knowledge of the grammar. Now when I say there are how many? 6, 4, 10 and 12. And I say there is 12 teachers sitting in the ETV studio. ठीक है? ठीक है? क्या है? क्या हो गया? बोलो. There are. मैंने क्या बोला था? There is. So if you are little alert, you can always pinpoint the mistake. And if I am making a grammatical mistake, the student is always bothered. She doesn't know. There are. She's saying there is. So he is not going along with you. He's stuck up there. He's finding faults. He's not learning. So avoid grammatical mistakes when you are there in the classroom situation. And you have to be technically correct. When I say technically correct, if I am using a meter, I have to say a meter. If I'm using a meter, I'll say meter. If I'm using a voltmeter, I'll say voltmeter. I cannot interchangeably use these words, a meter, meter and voltmeter. So I have to be very sure whatever I am teaching is technically correct. So communication will be effective. Then there are large number of non-verbal parameters which affect the effectiveness of communication. Some of you have given me, but these can be categorized into 5. When I say these can be categorized into 5, one is kinesics. Kinesics refer to facial expression, gestures, body postures, eye contact. Paralanguage. Paralanguage is tonal quality, the volume, the pitch, the rhythm, the articulation and pronunciation. Then there are artifacts. Artifacts include dress, clothing, jewelry, cosmetics, tattoos, accessories, hairstyle, perfume, etc. Chronomics. Chronomics refer to the time dimension, at which point of time the communication is taking place. Then comes proximics. Proximics refers to the space dimension. What is the distance between the teacher and the students, right? So we'll deal with these variables one by one. The very first principle is maintain eye contact. Now I need 2 volunteers. Ajo. Volunteer ajo. Ma'am aap ajo. Ajo. आओ जी जल्दी जल्दी.
So friends, what I am going to do is, I have requested two participants to sit back to back. Now please continue speaking with each other for 1 minute. Good morning. Fine. Lecture is very informative, enlightening, and it will definitely increase our awareness level. And I think you will be agreeing with me. Yeah. And I think you will be, when you will be in your classroom, you will pass on all the experiences and the traits you have acquired here, and to on your students there in the classroom, and they will be definitely benefited. Don't you think so? Yeah. Whatever we are learning here, it is really a refreshing course, and we feel spruced up, and all the fundamentals they stand revived. And what are your own experiences? How will you react? It was a very nice experience. I wasn't very good things, but I'm going to implement it. Please stop. Now, my question to both of you is, how did you feel talking to a person who's sitting back to you? So, I want to see the Can you come nearer to me, please, ma'am? Idhar aa jao. Idhar aao. So, friends, she is going to share the experience. Something was lacking behind. It was not good talking to someone while we are not looking at him, when eye contact is not there, when we are not able to see his face expression. What was actually the feeling? It was just a. आपके पास आऊंगी. हाँ जी. What was the feeling? Something is missing. That kind Something missing in the process of communication. And your name, please? Pinky. Thank you so much, Pinky. Aja. Sir, aaya. Now you share your experience. How did you feel being in a situation where you have to talk to a person sitting back to back? Talking sitting back to back, it was just a mechanical exercise, and the personal rapport and eye contacts and the role of body language that was missing. Talk was there, okay, but in the communication, the emotional and personal contacts, they were missing. Thank you so much. And आपका नाम sir? KC Ashri. Thank you so much, Mr. Ashri. So friends, when we are in the classroom, many times you come across a teacher who is writing on the board, and when we start writing on the board, we stand like this. The students are not able to see the facial expression of the teacher, and the teacher is having complete back towards the student. So the attention, the concentration is lost during that time. Another is, when you are using PowerPoint, many of us are in the habit of going and explaining on the projected screen. You defeat the purpose of your communication. Because when you are using a projection, the purpose is that you maintain eye contact with the class and you go on explaining the points. You need not go to the projected screen. You can use the monitor of your computer to pinpoint the things. Another thing happens, a teacher comes to the class with notes, and the teacher keeps the notes on the lectern stand, and the eyes of the teachers are glued to the notes. He is not maintaining eye contact with the class. The effect is adverse, negative on the student, because you are not showing concern for your student. Students say, अभी इसके नोट हटा दो तो ये पढ़ा नहीं पाएगी. यही होता है ना, हमारी भी तो यही फीलिंग होती थी. And let me share, one of our teachers, she used to bring the class notes in the class and used to dictate us, read from there and dictate. One day, the whole class enjoyed pickle, and the teacher didn't know that the class is enjoying the pickle. She was so engrossed in using the
moods. So a good communicator always try to maintain eye contact with the audience. So that should be your focus. And you should not maintain eye contact only with the front benches, but you should always have a distributed eye contact. Sometimes the people on your right, sometimes the people on your left, sometimes the people at the back, sometimes the people who are sitting in the center of the class. So you have distributed eye contact so that they feel concerned about teaching. Attentive रहेंगे. The second is, you can see here 3 images. What does first image indicates? What does first image indicate? Happiness. The second one, sad hai, gloomy hai. Third, terrified, horror. So what exactly is faces the index of your mind? Whatever feeling are there, they get reflected on your facial expression. If I am happy, that happiness is there. If I am sad, the sadness is there. If I am afraid of, and think a teacher coming to the class and he is afraid or she is afraid of teaching the subject to the student, क्या होगा फिर? क्या होने वाला है? अगर मुझे डर लग रहा है कि मैं क्लास में जाना है, हाय पढ़ाना है, क्या करूंगी फिर? क्या होगा क्लास में? इनडिसिप्लिन हो सकता है, और क्या हो सकता है? मेरे कम्युनिकेशन पे क्या इफेक्ट होगा? उल्टा पुल्टा बोलूंगी, फंबल फॉर वर्ड्स, मिस्टेक्स करूंगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाऊंगी. So it is said that a teacher must control the emotional state. He should be relaxed and he should try to be very pleasant when he or she is going to the class. और आपके जो different facial expression है वो हो सकते हैं, but your facial expression must match your verbal content. अगर surprise है तो surprise वाली feeling है, अगर आप खुश हो खुश वाली feeling है, अगर आप दुखी हो तो दुखी वाली feeling है, अगर आप गुस्सा हो बच्चों से, किसी बात पे आप गुस्सा करते हो और हंस के गुस्सा करते हो, उसका इफेक्ट क्या होगा? क्या होगा उसका इफेक्ट? मैडम मजाक कर रही हैं. तो दैट इज, जैसे घर में बच्चे लेते हैं, ओ हंस के बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ता. That is how the students are going to take it. So your facial expression must match the verbal content. The communication will be effective. What do you see here? What do you see here? Yes? Expression है ये क्या है? इसको क्या बोलते हो? Gestures, right? Use appropriate gestures. Very small. थोड़ा कैमरा किधर खोला है भाई? जा रहे हैं उधर? Very small, big, large, distant, in the sky, here, look here. You are giving directions with the help of your gestures, and gestures lend support to what you say. And if you're using appropriate gestures, now for example, I'm telling somebody the direction, turn towards right, and my hand goes like this. Now the person says, उसका हाथ इस तरफ गया था या ऐसे गया था, वो उसको याद रहेगा, visual imagery, and the person would be able to recall the information. He may forget the words right or left, but वो direction हाथ की याद रह जाएगी. So always, wherever you can use gestures, use gesture to your advantage. So we have certain standard symbols which can be used. Always make sure that the gestures which you use are culturally acceptable. आपको याद है cricket वाला incident? So always try to be sure that the gestures which are acceptable to the Indian members, Indian people, they are used in the classroom situation. Never try to have this kind of gesture in the class,
because this is a symbol of closed communication. That means जो मैंने बोल दिया वो सत्य वचन, वो ना मैं agreement ना disagreement चाहता हूँ, जो मैंने कह दिया वो final है. You don't invite feedback from others, but communication which is interactive, two-way, which has an element of feedback is effective, right? So avoid this. What do you see here? What do you see, Lingyas? Ji. बोल रहे हैं आप में से कोई? हाँ जी. What do you see here? The posture. The posture of the teacher also makes a difference in the communication. If you adopt an erect posture, right? I'm standing like this. Another is I'm standing like this. Another is I'm using a lectern stand and I stand erect. I slouch on the lectern stand. Or I stand like this. Would it make a difference? Would it make a difference? How? How? How it is going to make a difference? Erect posture is a symbol of dynamism, energy, enthusiasm. And जब आप पढ़ाने जा रहे हो, अगर आप energetic हो, आप enthusiastic लग रहे हो पढ़ाने के लिए, that will be, your students will also be motivated to learn. But अगर आप ही lethargic एक image लेके जा रहे हो, the students will be non-attentive, non-interested in your class. So always try to adopt an erect posture, and it is always desirable that you stand rather than sit when you are teaching. Right? अब बात करेंगे. You have said, you have given me this point, audibility. So that communication where you remain audible to the audience will be effective. If they are not able to listen to the words which are being spoken, then they'll not be able to learn, because learning starts with interpretation of the words. So audibility, अगर मैं ये बोल रही हूँ, yes friends, we are here to learn about communication and we deal with the concept, the types and the process of. कुछ समझ आया? क्या बोला मैंने? थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं समझ आया. So audibility, अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट है, I remain audible to 10. अगर मेरे पास 30 स्टूडेंट है, I remain audible to 30. अगर मेरे पास 80 स्टूडेंट है, I remain audible to 80. Use public address system if you are not able to throw your voice to 80%. आज तो आपके पास cordless mics है, carry that cordless mics. There's no harm in carrying that system to the class and remain audible to your students. आप लोगों ने कहा था articulation and pronunciation. अब बोलेंगे नहीं आप. I'm going to show you few words. I would request my friend here to speak the word which you are able to see on the screen. जी बोलिए. Okay. Okay. From GP Sampla, anybody would like to speak out the word? Yes. Screen. General. Ma'am. हाँ जी. बोलिए बोलिए please. Generally. Okay. May I go to Lingyas? Lingyas Institute. So I think मैडम ने जो जीपी सांपला से बोला था बहुत अच्छे से उनकी प्रोनाउंसिएशन जनरली पर अगर आप इसको डेली लाइफ में सुनते हो बहुत सारे लोग इसको जर्नली बोलते हैं. Yeah, they speak journally rather than generally. So it is generally. Go to the second word. Ma'am, would you like to speak up? Mispronunciation.
Mispronunciation. Okay, thank you very much. Over to Lingyas. Mispronunciation. Mispronunciation, not pronunciation. Fine. Okay, Lingyas, can you see the word on the screen? Hierarchy. Very good. Hierarchy. So one R is silent here, but many people would say hierarchy. Right? TTC Jodhpur. TTC Jodhpur. एक और भी तो इंस्टीट्यूट है ना, वो कौन सा है? ओके, एटसेट्रा. ओके सर, टीटीसी जोधपुर आप ही बोलिए इसको क्या है. आप देखो दो लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है लिनक्स, कोई बोल रहा है लाइनेक्स. सो व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? दाउ इट इज अ नाउन. लिनक्स. सब जानते हो इसको. बोले ऊंची ऊंची. Okay, somebody was speaking from TTC and Lingyas. Yes. Maybe we request GP Sampla. GP Sampla, anybody would like to try? बुलियन. ये आपने वर्ड देखा होगा. जी बोलिए. Rapo. Rapo. Thank you very much. I think you can come out with number of words. I have few more, but many times these words are mispronounced. So one has to pay attention to articulation and pronunciation. Articulation refers to how much is the opening of jaws, whether you inhale, you exhale, where is the placement of tongue in the mouth. So it is dealing with phonetics. And pronunciation is the outcome. So better the articulation, better will be the pronunciation. So one has to see with practice you can improve upon your pronunciation, right? So the teacher must pay attention to the pronunciation. Check your rate of delivery. Somebody said you cannot be too fast or too slow. If you are too fast, people cannot make out what words you are using. You mumble. People are not able to understand. But once you slow down to an extent, there is discontinuity in your speech. So you can be between 90 words to 110 words. 90 to 110 words per minute. That should be the speed. If you're dealing with simple things, speed can be faster. If you're dealing with difficult things, speed can be slower. Vary your pitch. अब सुनोगे आप मुझे. Communication is the process of sending and receiving messages with some effect and with some opportunity for feedback. एक तो ये तरीका है. Communication is the process of sending and receiving messages with some effect, with some opportunity for feedback. कौन सा better था? Second वाला. Because there was variation in the pitch. अगर मैं एक ही pitch पे बोलूंगी, it becomes monotonous, boring for the audience. So I need to bring some variation in the pitch. So when you start a sentence, the pitch is low. When you're in the middle of the sentence, the pitch is raised. And when you're closing the sentence, the pitch drops down. तो ये rhythm आपको follow करना है. जानते हो? We can use different modes of communication. We can whisper. We can be soft. Conversational mode is that you are talking one to one. बातचीत जैसे कर रहे हैं दो लोग. You can be loud or you can yell. But in social situation, try to avoid yelling and whispering. Because when you whisper,
जब कानाफूसी होती है, दो लोग कानाफूसी करते हैं, अगर आप उस सिचुएशन में है, आपको कैसा महसूस होता है? से 3 of you are sitting और ये दो लोग कानाफूसी कर रहे हैं, तो क्या लगेगा? अनोइंग। आपको बहुत बुरा लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं जो मुझे नहीं बता रहे हैं, व्हाट इज दैट सीक्रेट? सो यू फील यस, जेलस नहीं, निग्लेक्टेड। सो अगर टीचर किसी स्टूडेंट के पास जाके कानाफूसी करता है तो बाकी सारी क्लास क्या फील करती है? भाई ऐसी क्या बात है जो मैडम सिर्फ इनको ही बता रही है, बाकियों को नहीं बता रही, है ना? इरिटेट होते हो आप। यस, सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड विस्परिंग एंड येलिंग। क्यों अवॉइड करनी चाहिए? क्लास में चिल्लाना क्यों नहीं चाहिए? अनप्लेजेंट है, आपका कंट्रोल नहीं है ऑन द वर्ड्स, ऑन योर बॉडी मूवमेंट, ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशन. So always avoid yelling and whispering. You can be soft and you can be loud, or between these the conversational mode is the best. जैसे कि आप दो लोग बात कर रहे हैं, that is the best mode. Soft कब होना चाहिए टीचर को? When the teacher ought to be soft. तो कन्वर्सेशनल मोड है, सॉफ्ट कब होना चाहिए? When student is repeating the question again and again, student is not able to respond to your question, student has a difficulty in understanding, student is giving a reason for not submitting an assignment, you ought to be soft. लेकिन होता क्या है? उल्टा है, we become angry with that person. नहीं. When you want to be loud, कब हम ऊंची बोलते हैं? जब कुछ असर्ट करना होता है, जब थोड़ा डिसिप्लिन क्रिएट करना होता है, जब दूसरा बंदा बहुत दूर होता है या बहुत सारे लोग होते हैं. Draw the attention of people. So always try to be being soft to being loud. देन एक प्रिंसिपल इसके अलावा आपका आ जाता है, यूज पॉजेस. रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वर्ड्स वही है. कहां पे पॉज लगाया, उसने मीनिंग बदल दिया. फर्स्ट सेंटेंस वर्ड स्टॉप हिम, डोंट लेट हिम गो. दूसरा था डोंट स्टॉप हिम, लेट हिम गो, लेट हिम गो. तो ऐसे ही इंग्लिश जब आप बोलते हो, where you put a pause while you are speaking, that will make a difference. I'll just show you 2 sentences which you can speak and then find out. The teacher said the student is an idiot. Second sentence is the teacher said the student is an idiot. आपका बोलने में आप कहां पॉज लगाते, वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देता है, राइट? सो पे अटेंशन टू दिस. सॉरी, ये कहां चला गया? ओके, देन देयर आर वर्बल वायरसेस. Verbal viruses frequently used phrases which have no potential meaning in communication. अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं, oh hi, we met twice a day. Huh? We met yesterday, okay. We went to the restaurant, okay. We had a lunch, okay. We discussed political issues, okay. कितना इरिटेटिंग हो जाता है दूसरे बंदे के लिए ओके 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 सुनना. वो कहता है मिस्टर ओके आ गया. होता है ऐसे, वही से ना तकिया कलाम है बंदे का. इसी तरह लोग यूज करते हैं यूसी. दिखाना तो कुछ नहीं है, यूसी. आप कहते हो आई वेंट टू अमृतसर, यूसी. आई वेंट टू द पॉलिटेक्निक, आई मेट द फैकल्टी, यूसी. अब उसमें दिखा कहाँ रहे हो आप, क्या दिखा रहे हो उसको? यू नो यूज करते हैं लोग, एक्चुअली यूज करते हैं. आजकल अगर सीरियल देख रहे हो तो एक्चुअली बहुत यूज होता है. यस, राइट, ये तकिया कलाम है. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई इफ यू हैव एनी वर्बल वायरस. If you come across such verbal virus, try to eliminate that from your repertoire.
आप जितना वर्बल वायरस को छोड़ दो उतना आप इफेक्टिव हो जाओगे, राइट? देन ये मुझे लगता है ऑपरेट फ्रॉम आई एम ओके, यू आर ओके, लाइफ पोजीशन। ये मैनेजमेंट वाले फ्रेंड्स मेरे जानते होंगे कि हम लोग डिफरेंट लाइफ पोजीशन से ऑपरेट करते हैं. एवरी इंडिविजुअल हैज सम परसेप्शन अबाउट हिमसेल्फ एंड परसेप्शन अबाउट अदर्स. या तो हम कहते हैं कि आई एम ओके. आई एम ओके का मतलब है आई हैव सर्टेन कैपेबिलिटीज, आई हैव सर्टेन पोटेंशियल, I can live a life, I can take my decision, I can contribute, right? I am not okay का मतलब है I have nothing which I can contribute. इसी तरह लोगों के बारे में perception होती है कि whether the other person is okay or not okay. So always try to operate from I am okay, you are okay when you are communicating with others. That means you give unconditional respect to the other individual. You accept the individual with his strengths and weaknesses, and you allow the other person to interact, to participate in the process of communication. So communication is open, two-way, feedback channels are open, and thus your communication remains effective. अगर आप ऑपरेट करते हैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके. जब मैं कहती हूँ यू आर नॉट ओके तो मैं कहां से ऑपरेट करती हूँ? अथॉरिटेरियन. मैं अथॉरिटेरियन बन जाती हूँ. जो मैं कह रही हूँ वो सब सत्य वचन, बाकी कुछ नहीं. आपको कुछ नहीं आता, आप डफर हो, सब कुछ नहीं पता आपको. ये मैं लेके चलती हूँ अजम्पशन. सो नेवर मेक एनी अजम्पशंस. हालांकि आपके पास स्टूडेंट है, हम लोग कहते हैं उसको कुछ नहीं आता, नहीं, उसका भी 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, विच मे बी राइट और विच मे बी रॉन्ग, पर कुछ तो है. सो ऑलवेज गो विद आई एम ओके, यू आर ओके, देन कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव. देन आपका वर्बल वायरस की बात की, साइलेंस. We can use silence to our advantage. जब आप कुछ बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हो, you can be silent for a fraction of second. आप कुछ इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हो, साइलेंस precedes discussion of important issue. कहते हैं ना उसकी चुप्पी कुछ कह गई. कई बार क्लास में बच्चा इनडिसिप्लिन करता है, आप सिर्फ चुप करके जाओ 2 सेकेंड के लिए, मे बी 3-4 सेकेंड, द स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स द मैसेज, वो इनडिसिप्लिन खत्म हो जाती. तो यूज साइलेंस टू योर एडवांटेज. एंड आई वुड बी फ्रेंडली, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम बायसेस एंड प्रेजुडिसेस. जितने भी आपके बायसेस हैं ना, वो क्लासरूम के बाहर छोड़ के आइए. Treat all the students on a common footing. To give them equal treatment. ये नहीं कि मैडम तो आ गए 10 मिनट लेट तो मैंने कहा आ जाओ, और आप आए 10 मिनट लेट तो मैंने कहा चले जाओ, क्लास में नहीं एंटर करने की जरूरत नहीं है. Now that means the students develop negative attitude towards the teacher. ये आपकी communication है. So always treat everybody on a equal footing. Provide time for assimilation. थोड़ा थोड़ा कहीं पे pauses ले लेने चाहिए, so that you give time to the students to understand what they have listened to, obtain and provide feedback. हमेशा क्वेश्चन पूछो. जब आपने एक important aspect डील कर लिया, pose a question to the student, get a reply, then you will make out whether they have understood or not. ठीक है? And अब ये देखिए, अगर मुझे अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, रिकॉर्ड योर वॉइस. रिकॉर्ड कर लीजिए. आज आपका मोबाइल है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. आस्क योर फ्रेंड टू बी देयर इन द क्लास, रिकॉर्ड यू फॉर हाफ एन आवर 1 hour. उसको बैठ के एनालाइज करो, दूसरों को दिखा दो, उनकी फीडबैक ले लो, खुद एनालाइज कीजिए. आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस.
आपकी रेट ऑफ डिलीवरी, आपकी लैंग्वेज, आपकी ग्रामेटिकल करेक्टनेस, आपकी टेक्निकल करेक्टनेस, आपकी एक्सप्लेनेशन, यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, ये सब चीजें आप एनालाइज करो। अगर किसी चीज पे आपको लगता है कि आप में कमी है, make it a point to deliberately bring a change. Practice, practice, practice. Practice makes the man perfect. Right? एक स्ट्रेटजी हम ये अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, चूज अ रोल मॉडल। कौन आपके लिए एक अच्छा ओरेटर है? Whether he is a news reader, whether he is a political leader, whether he is she is your mother, father, brother, sister, और कोई रिलेटिव है, कोई कम्युनिटी में आपका डॉक्टर है, कोई पुराना टीचर है जिसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो। See how that person communicates, what words that person use, what of gestures accompany those words, what is the articulation and pronunciation. Try to imitate. मैनेजमेंट में बोला जाता है steal ideas shamelessly. और अच्छी चीजों को चुराना बुरी बात नहीं है। कोई अच्छा बिहेवियर है, कोई अच्छा आपको लग रहा है, नॉट मटीरियलिस्टिक थिंग्स, बट हाँ अच्छा बिहेवियर है, अच्छी चीज है, अच्छे वचन है, उनको चुरा लीजिए एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अपने को इमेजिन कि मैं एक अच्छा वक्ता हूं। जब आप अपने को विजुअलाइज करते हैं, इवन देन यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ गुड ओरेटर। सो दीज थिंग्स कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर स्पीकिंग। मुझे टाइम बताइए जरा, व्हाट इज द टाइम लाइक? Quickly, I'll take 5 minutes and deal with 10 principles of effective listening. पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जो लिसनिंग है, प्रिंसिपल क्या है? अच्छा लिसनर वो होता है जो कि स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करता है। उससे पहले भी जो बंदा चुप कर जाता है, स्टॉप टॉकिंग। अगर आप मुझे सुन रहे हो और आप आपस में बात करो, then you are not listening. So the first behavior should have been stop talking. And दूसरा है कि बोल रहा है उसके साथ eye contact maintain की। When you maintain an eye contact, you give respect to the speaker. Speaker gets motivated to continue the speech. Determine whether or not the speaker ideas are worthwhile solely by his or her appearance. Ye don't. Never try to make any assumptions on the basis of dress of a or outer appearance of a person. Give the opportunity to the person to speak something and then make your opinion whether the person has something to contribute, something valuable. कभी कभी क्या होता है कि हम बंदे को देख के धारणा बना लेते हैं, अरे ये क्या पढ़ाएगी, होता है ना। और अगर आज मैं अंदर आई, कुछ आपको लगा होगा, या कल आपने देखा, तो आपको क्या लगा कि ये बोल पाएगी, नहीं बोल पाएगी, कुछ तो धारणा है ना आपके मन में, तो क्या लगा था? जी ओके तो देख के लगा था कि ये नहीं, इतना अच्छा तो नहीं लगी ना, लगा था। ठीक है। So sometimes we have judgments, all of us make, but avoid all these assumptions. The persons and then make the opinion about person. Hanji, I try to align my thoughts and feelings with those of the speaker. अच्छा लिसनर वही है जो कि जो स्पीकर सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो भी वही सोच रहा है और वही महसूस कर रहा है। So always try to align your thoughts and feelings with that of the speaker. Then you understand the meaning of what a person really wants to say. I listen for specific facts, then for the big picture. Never do this. Always try to listen to the totality of the message.
होल में सुनिए, पूरा सुनिए, फिर कोई जजमेंट बनाइए। अगर आप कहते हो कि मैं तो इंटरेस्टेड हूं जी, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन हो गई, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, किस डेट को कितने थे, अब कितने हैं, you are not actually getting anything. But if you are listening to the implications of this growth of population in India, then you will understand whether it's a menace or a boon or a bane, right? I listen for both factual content and the emotions behind that. A good listener always listen to both the content and the emotions. I just take an example. बच्चे हैं, जब 11वीं 12वीं में हो जाते हैं तो बच्चे घर लेट आते हैं, एंड या तो मदर बाहर खड़े होते हैं या फादर बाहर खड़े होते हैं, एंड दे आर क्रिटिसाइज्ड, पनिश्ड, अब्यूज्ड, और बच्चे क्या करते हैं, रिटेलिएट कर देते हैं। होता है ऐसा, बहुत बार होता है। लेकिन if the child understands the concern of the parent for himself or herself, the retaliation will not be there. So always try to enter into empathetic listening. That is, you try to understand the feelings behind the content. Then listening would be effective. Then I ask questions for clarification and understanding. A good listener always try to pose questions. अगर मुझे कहीं समझ नहीं आया, I let the speaker finish the idea, then I pose the question. Interrupt नहीं करूंगी बीच में, but वो finish कर लें. Otherwise, the person who is a listener stucks up at a particular place and he doesn't have the same pace as the speaker. I withhold judgment of what is being said until the speaker has finished. So जब वो पूरी बात अपनी कह लेते हैं, तब आप कोई धारणा बनाइए उसके बारे में, in between नहीं, पहले नहीं, right? हम क्या करते हैं, पहले ही prejudge the communication. While listening, I think about what I am going to say when I'm going to say as soon as I have my turn. मैं तो ये शुरू कर लेती हूँ, भाई जब ये खत्म करेगी तो मुझे क्या बोलना है, मैं उसकी में लग जाती हूँ। अच्छा लिसनर नहीं है वो आप। अच्छा लिसनर वो है जो पहले सुनता है, फिर अपनी बात को सोचता है, फिर बोलता है, राइट? Try to have the last word. अच्छा लिसनर वो है जो ये सोच के नहीं जाता कि जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है, वही माना जाए। नहीं, you go with open mind, say your thing, but you don't go with the assumption that that will be accepted and final. So ये चीजें हैं जो आपको, I would say, simply just go कभी भी प्रीजज मत करिए कम्युनिकेशन को। कभी भी जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला, टॉपिक आने वाला है, उसको अनइंटरेस्टिंग मत बोलिए। अगर आप ये चाहते हो कि हाँ कम्युनिकेशन हम सब जानते, इसके बारे में क्या सीखेंगे, तो यू स्विच ऑफ फ्रॉम द क्लास। अगर आप थोड़ा सा सोच के, तो हो सकता है एक आधा पॉइंट कुछ नया मिल जाए, देन यू विल लिसन टू द अदर पर्सन। क्रिटिसाइजिंग द स्पीकर्स डिलीवरी। हम लोग ना कहते हैं अरे इसको तो प्रोनाउंस ही नहीं करना आ रहा, इसको तो ग्रामेटिकल करेक्टनेस नहीं है, सो यू आर स्टक अप। तो आप फॉल्ट फाइंडिंग करते हो, आप सुनते नहीं हो, मैसेज को समझते नहीं हो। लिसनिंग ओनली फॉर फैक्ट्स इज टू बी अवॉइडेड। फैक्ट्स भी सुनिए, इमोशंस बिहाइंड दोज फैक्ट्स वो भी सुनिए। गेटिंग ओवर स्टिमुलेटेड। कई बार होता है स्पीकर अपना एक्सपीरियंस सुना रहा होता है, और मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सिर्फ एग्जांपल, आपका जो टीचर है वो शिमला होके आया है, वो उसको नरेट कर रहा है, आप भी जाके आए थे 2 महीने पहले। नाउ यू आर रिमाइंडेड ऑफ योर एक्सपीरियंस। आप टीचर को नहीं सुनते, आप अपने एक्सपीरियंस में गुम हो जाते हो। सो यू गेट ओवर स्टिमुलेटेड बाय योर ओन एक्सपीरियंस, सो यू फॉरगेट। ट्राइंग टू टेक कॉपियस नोट्स। हम ट्रेंड है, जो टीचर बोल रहा है लिख लो लिख लो लिख लो। A good listener is one who takes notes in his own words.
So always try to have notes which are brief, which are in your own words, and you interpret them later on. Faking attention. कभी कभी होता है हम क्लास में बैठे हैं लेकिन सोच कहाँ की रहे हैं, भाई कब ये खत्म करेगी, कब मैं बाहर निकलूंगा, कब चाय पीऊंगा और कब मुझे छोड़ेगी, घर जाऊंगा. So you are just looking at the person faking attention but thinking of something else. Tolerating or creating distractions. हम इंडियंस कुछ बहुत ज्यादा अच्छे हैं. हमारे साथ वाले दो बंदे बैठे बातें कर रहे होते हैं, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, पर हम ये नहीं कहते कि भाई चुप कर जाओ, सुन लें दो. So we keep on tolerating the distractions. Avoiding technical and difficult material. Filtering out the message. जो तो आसान लग रहा है उसको सुन लेते हैं, जो डिफिकल्ट आएगा छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे क्या बोल रही है. ठीक है. लेटिंग इमोशनली लेडन वर्ड्स, ये ओवर स्टिमुलेटेड वर्ड मैंने आपको बोला था, तो वो भी है. वेस्टिंग द डिफरेंशियल बिटवीन स्पीच स्पीड एंड थॉट स्पीड. आप जितनी जल्दी बोल सकते हो और जितनी जल्दी सोच सकते हो, कि कौन सा तेज है, सोच सकते हो ज्यादा कि बोल सकते हो ज्यादा? आपकी सोच बहुत तेज चलती है. जब टीचर सोच रहा है, जो लिसनर है वो कहीं का कहीं पहुंच सकता है. सो ऑलवेज ट्राई टू यूज दैट टाइम विच इज देयर बिटवीन द थॉट स्पीच एंड द स्पीच स्पीड ऑफ द टीचर एंड यूटिलाइज इट. किस चीज में यूटिलाइज करेंगे? जो आपको पहले से आता है उससे रिलेट करो, एनालाइज करो कि जो कह रहा है वो कंसिस्टेंट है, उस पर डिपेंड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता. रिहर्सिंग अ रिस्पॉन्स, अवॉइड दैट मेंटल रिहर्सल ऑफ द response. So these are some of the principles which you should avoid, don'ts, and there were certain things which you should do. So if you adopt these principles, you can become more effective communicator. So friends, if you have any question, can pose a question from my side. Thank you very much. Over to Lingyas. कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मैम, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू जीपी सांपला. कोई क्वेश्चन है आपका? नो मैम. थैंक यू. ओवर टू टीटीसी जोधपुर. टीटीसी जोधपुर. नो मैम. Thank you very much. So we break for a cup of tea and reassemble at 11:30 for the next session. Thank you very much. So thank you very much. कोई question तो नहीं है? So I think you can all join for a cup of tea and reassemble. दीपिका जी, ए अरेंजमेंट नहीं ठीक चल रहा. ए अरेंजमेंट ठीक नहीं चल रहा. पता की करो, जेड़ा स्पीकर है ना उन्होंने इधर बिठाओ सामने, जेड़े स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इधर बिठाओ. डायरेक्ट आई कांटेक्ट उत्थे रहना चाहिए ना, वो सीधा नहीं जा रहा, साइडवेज जा रहा है. मेरी नजर इधर है तो कैसे जाएगा? नहीं नहीं, वो गलत हो रहा है. देखो मैं आपको ट्रू टेल मी, जैसे आपने यहाँ पहले रखा था ना टेबल सेंटर में,
Okay. And job center currency fourth. Ten. Okay. Okay. We are from same college or different colleges? Different. Okay. From Haryana and Delhi. And from other states also? Okay. Okay. They are linked. Okay. Faridabad, UP, and Tampla. Okay. Shall we start? Okay. A very good afternoon. I'm Amardev Singh, Assistant Professor in Entrepreneurship Development and Industrial Coordination Department at NITTTRCHD, Chandigarh. And today I welcome you to this session on entrepreneurship development. And we can talk about industry institute partnership also. And now I am going to start with my session, and during the session we will go through the mode. If any center has any question, then they may stop me and they may raise their question, and while one center is speaking, a participant from a center is speaking, other centers will mic on mute mode, so there's no problem of echo. Okay, thank you very much. Once I will test, all of you are with me. TTC Jodhpur, are you with us? TTC Jodhpur? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ji. Thank you. Government Polytechnic Sapla, are you with us? Okay. Lingias University, Faridabad? Hello. Yes, sir. Okay, thank you, ma'am. And you are with me, I hope so, after lunch. Okay, welcome. Okay, when we say the main thrust of this session is to bring forward an orientation towards entrepreneurship in present times. When we say entrepreneurship in the present times, how it should be and how, what is it, the present scenario going on in context of entrepreneurship, we will talk about that. And we will first start with your response. Can anybody share what is who is an entrepreneur and what is entrepreneurship? Okay. You set up an organization. Okay. Create some new ideas and innovations. Okay. New ideas, new innovations. Okay. Any other person? Huh? Organizer, innovator, and risk taker. Okay. Organizer, innovator, and risk taker. Okay. Any other center? Any participant from any other center who can elaborate upon who is an entrepreneur and what is entrepreneurship? Any participant from any of the centers? I hope we are here for interaction rather than lecturing. Are you with us? Any center? Okay. I will take, since these participants are with me at this center, so I will take the leverage. When we say entrepreneurship, rightly remark, we have a number of things, ideas, innovations, a person who is an organizer, but I would go with who is a risk taker, who takes risk for others and for self also. And job creation जो है उसका एक साइड बाय प्रोडक्ट है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट, इट क्रिएट्स जॉब. इस पे हम बात करेंगे, आइडियाज पे बात करेंगे, क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे बात करेंगे, and how do it plays a role in today's world. We will talk about that also. Okay, we will first review some of the definitions by some of the researchers who have worked hard in this domain. According to Mark Kazan, an entrepreneur is someone who specializes in taking judgmental decisions about the coordination of the scarce resources. Means हर person के पास ideas हैं. There may be I may be having wonderful ideas. मैं अभी आपसे कुछ ideas share करूँगा जो मैं 6 महीने पहले अपने sessions में share करता था, और उसकी example मेरे को last week Yahoo पे मिली, तो कि वो implement हो चुका है. So it means if I am thinking some other person in some other part of the world, corner of the country, state, city is also thinking. So he is a person who specializes in taking judgmental decisions about the coordination of scarce resources. An entrepreneur shifts, according to JB say, an entrepreneur shift economic resources out of an area of lower productivity and yield into an area of higher productivity and yield. Okay, can you differentiate between efficiency and effectiveness when we talk? इस पे मैं जरूर डिस्कशन रखता हूँ अपने सेशंस में. Effectiveness is doing the right thing, and efficiency doing the thing right. Doing things right. When we say efficiency, it is a
quantitative term. It is a ratio. If we ask a mechanical engineer, any mechanical engineer, it is output upon input. If you have to improve the E, it means either you have to improve the O, keeping the input same, or you have to, for the same level of output produced, you have to minimize the inputs so that E goes up. But while deciding, while if you say are an entrepreneur or you are the owner of a company, do you have to be efficient or effective? Both. Both. Can you give an example at which phase you have to be efficient and which phase you have to be effective? So in production level, you have a high level. Efficiency means you have to done work quickly and intelligently. That's it. Both things are high level is required and quickly and intelligence also required. Okay. Another center? Who can elaborate? Can anybody share what is effectiveness? Efficiency we have discussed. What is effectiveness? Any center? Okay, we have Lingas University. Can anybody share what is effectiveness? Anybody? Sure, we are getting you. What is effectiveness? Okay, any center? We have TTC Jodhpur. TTC Jodhpur. Can you elaborate upon effectiveness? सर कोई बताना चाहेगा इफेक्टिवनेस? हाँ जी, हाँ जी. We are getting you. Yes, sir, there is Other center. So effectiveness is how properly the output has occurred, how much the output has benefited. It is not related to the input, whereas in efficiency the output is related to the input. Okay. We will write. Please mute your mic. Okay. When we say thank you. When we say effectiveness is impact. For example, एक day-to-day routine activity मैं लेता हूँ. We have all of us own vehicles. Activa सभी के पास है, 2-wheelers. We get calls from the service center that your service of your vehicle is due. For example, there are two persons, person A and B. They are assigned to make the calls in a day, and they are assigned to make 200 calls in a day. There are two persons A and B. They have to make 200 calls. One person makes 100 calls and other person makes 300 calls. तो A अगर 100 कॉल बना रहा है, मेक कर रहा है, तो इट मींस उसकी एफिशिएंसी क्या है? 50%, बिकॉज दे हैव बीन असाइंड 200. बट जिसकी 300 कॉल्स कर रहा है, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी क्या है? 150%, बिकॉज ही इज मेकिंग 200 प्लस 100, 50% ऑफ दैट. बट कैन यू से कि जिसने 300 कॉल्स की है उसी का इम्पैक्ट ज्यादा होगा? मे बी आउट ऑफ पर्सन हु मेड 100 कॉल्स, out of those 75 people turn for getting actual service man, but out of the person who has made 300 calls, maybe वो कॉल करता था, उसको 30 सेकंड बात करता था, नाम पूछता था और उस कॉल को ड्रॉप कर देता था. इट मींस उसने कॉल्स तो ज्यादा की, बट मे बी उसका जो एक्चुअल टर्न अराउंड है 50 लोग भी सर्विस करवाने नहीं है. सो यू कांट हैव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस सेपरेटली. सो जो एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो ही हैज टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. बट जब एक एंटरप्रेन्योर अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट करता है, व्हेन यू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट, न्यू एरिया, न्यू प्रोडक्ट, देन यू हैव टू बी इफेक्टिव. जैसे मैम ने राइटली रिमार्क किया था, डूइंग राइट थिंग्स. एंड जब आपका 1-2 साल चल गए, आपने शुरू कर लिया, एक निश एरिया में काम करना शुरू कर दिया, नाउ यू हैव टू स्टेप एंड you have to meet the economies of scale and scope. I hope all of you must be clear of economies of scale and scope. Economies of scope means when you go for a expansion of your product line. And economies of scale is when you say अगर एक समोसा मैं बनाता हूँ तो एक समोसा मेरे को 10 रुपए का मिलता है, और अगर 100 समोसे का ऑर्डर देता हूँ तो वो मेरे को 5 रुपए का मिलता है. तो इट मीन्स कि पहले तो एंटरप्रेन्योर को एक यूनिक निश एरिया देखना है, उसके बाद ही विल गो फॉर एफिशिएंसी आल्सो.
वो ये नहीं कह सकता कि मैं इफेक्टिवनेस पे ही काम करूंगा, नया एरिया ही ढूंढता रहूंगा, बट हिज टीम हैज टू efficient also, they have to standardize also. तो जब हम efficiency की बात करते हैं तो वहां पे principles of quality and quality management आ जाते हैं, they come in. When we say your lean manufacturing, we say Six Sigma, हमने ये सारी terms सुनी होगी, तो they come in. But when effectiveness it has to be related with impact. So जब एक entrepreneur start करता है, he has to be effective, then he has to be on some bit on part of efficiency also. Okay. उसके बाद हम बात करते हैं creativity and innovation पे. Okay. एक term innovation आया था. Can anybody make a difference between creativity and innovation? What is the difference between creativity and innovation? And why it is important in today's scenario? Basically, creativity leads to news, and both are important in current scenario because we have to create it, then we can invent something. Then we can go for the innovation. Okay, what is the difference between invention and innovation? Innovation is maybe to improve upon the existing things, okay, to reorient them, to design, to reshape, redesign them for new functions. Okay. When we talk of creativity, a person, we say a person to be creative जबकि वो किसी चीज को करने का नया ढंग ढूंढ लेते हैं, जहाँ उस चीज को ही नया बनाता है. Creativity means style मेरा कुछ और सकता है, आपका कुछ. Creativity is basically related to the originality. हाँ, originality and your individual characteristics. It is a individual characteristics. When it may be a individual creativity and you may turn it into a group creativity. For example, if we talk of Tata, designing of it, creativity, and it is a group creativity. All members brought on board to create that product. But innovation, when it becomes innovation, when it is linked to the serving the need of the or the want of the or desire of the society and earning money from it. जब आप उसके साथ एक business cycle जोड़ देते हो, then it becomes innovation. Then it becomes innovation. For example, जो हम म्यूजिक सुनते थे, म्यूजिक हम रेडियो से भी सुनते थे. When it came into the iPod kind of thing, then it was the person who conceived that idea. एक छोटे से डिवाइस सुन सकते हैं. That is a creativity, his creative idea. But when it was converted into and brought into the market, then it became innovation. Invention may convert into innovation or it may not. For example, मैंने एक फैन के मैकेनिज्म में एक नया प्रोसेस टेक्नोलॉजी इसको कर लिया, इन्वेंटिव स्टेप ले आया, बट आई मे बी इन अ पोजीशन टू मार्केट इट और टू ब्रिंग इट टू द मार्केट और टू सेल इट टू द मार्केट. सो जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं तो इट टॉक्स ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बट बाद में उसकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी कमर्शियलाइजेशन पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे. और ये आज के में क्यों जरूरी है? बिकॉज तो हम प्रॉपर्टी बात करते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो जो पॉपुलेशन का नेचुरल सी बात है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड के प्राइसेस है वो अप जाएंगे और इट इज नॉट फिजिबल फॉर अ पर्सन टू परचेज acres of land and set up an enterprise over there. So that's why हमारे जो APJ अब्दुल कलाम जी फॉर्मर प्रेसिडेंट हुए थे, वो भी इस पे फोकस करते थे कि your ideas should become your capital asset, कि आपके आइडियाज, क्रिएटिविटीज अगर आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से प्रोटेक्ट करके उसको अच्छी एंटरप्राइजेस को सेल ऑफ करो, देन आल्सो यू कैन अर्न मनी. कैन बी अ नॉलेज एंटरप्रेन्योर. BPOs उसमें कई प्रोसेस होते हैं, उसमें हम कुछ पे बात करेंगे आप चाहेंगे. तो दे आर वर्किंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप. उसमें आपको कैन मोर्टार स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, आपने पहले एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, फिर उसके बाद ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ही आपने एंटरप्रेन्योरशिप करना है. देयर इज नो नीड फॉर दैट. ओके, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा. एन एंटरप्रेन्योर शिफ्ट्स द इकोनॉमिक रिसोर्सेज आउट ऑफ एन एरिया ऑफ लोअर प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड इनटू एन एरिया ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर यील्ड. मैंने एक जम्मू में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू के लिए. तो वहां पे हम एक विजिट के लिए गए एक इंडस्ट्री में, और वो इंडस्ट्री का काम था कालीन बनाने का.
कालीन बनाते थे। तो मेरे माइंड में उनमें हमने पूछा कि रॉ मटेरियल आपका कहाँ से आता है, तो दे से कि फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी, रीजन ऑफ यूपी, एंड कुछ वो फॉरेन कंट्री का नाम मेरे को माइंड से स्किप हो रहा है, बाहर से मंगवाते थे। तो मेरे में ये क्वेश्चन था कि वो यूपी में फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई उन्होंने, व्हाई दे हैव मेड इन जम्मू। तो देयर वाज क्वेश्चन कि वेयर डू यू सेल दीज कालीन्स, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से हमारा श्रीनगर जाता है। जिस चीज का रेट यूपी में मे भी 100 रुपया मिलता है, वही चीज नगर में जाके लोग उसके लिए 500 रुपया भी देते हैं। तो वही एक मैं छोटे छोटे कालीन ईस्ट होता है कुछ लेके आया, वही 300 समथिंग का, जब वो मैंने जलंधर में देखा तो वही चीज मेरे को 150 रुपीज की मिली उधर से। तो बट ने क्या किया, उस पर्सन ने किया कि जम्मू तक रेल कनेक्टिविटी अच्छी है, थ्रू दैट रेल दे कैन इजिली ट्रांसपोर्ट देयर रॉ मटेरियल। वहां से रोड नेटवर्क से दे कैन गो टू नगर एंड वहां पे भी सर्व कर, यहाँ से जम्मू की मार्केट को भी सर्व कर देंगे और जम्मू से वापस आप इधर नदरन और स्टेट्स को भी सर्व कर सकते हैं। So it is a clear example of an entrepreneur shifts the economic resource out of an area of lower productivity and yield into an area of higher productivity and greater yield. Okay, next slide. Okay. According to Frisk Knight, maximizing profits by bearing uncertainty and risk. तो entrepreneur जो है एक अनसर्टेनिटी को भी बेयर करता है, रिस्क भी बेयर करता है। अगर मान लो एक R&D में इन्वेस्ट करना है, एक नए प्रोडक्ट को लेके आना है, तो आप मे बी हम डाउटफुल होंगे बट ही विल एक्सपेरिमेंट इट। मे बी वो टेक्नोलॉजी 2 महीने तक रहे, 6 महीने तक रहे, मे बी साल तक रहे। An entrepreneur is a dynamic agent of change or the catalyst who transforms the natural and human resources into the production possibilities. It is clear, self-explanatory. Entrepreneurship is a creative activity, the entrepreneur being an innovator who introduces something new into the economy, according to John Schumter. According to the International Labour Organization, entrepreneurs are people who have the ability to see and evaluate business opportunities, gather the necessary resources to establish the venture, and to initiate appropriate action to ensure success. यहाँ पे 3-4 चीजें लिंक हुई है। पहले, who has the ability to see and evaluate business opportunities. For example, फर्स्ट पर्सपेक्टिव मैं अपने आप में भी देखता हूँ, बट अगले 2 मेरे में नहीं है। लास्ट ईयर एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो हुआ। आई वाज इन दिल्ली इन फरवरी कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एट मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहां पे जब इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो में ये था कि 3D प्रिंटर का कंसेप्ट आया था, 3D प्रिंटर का। तो मेरा मन था कि मैं उसको देख के आऊं, बट देख नहीं पाया। बट मेरे माइंड में ये था कि 3D प्रिंटर से मैंने ये जो पैम्फलेट से पढ़ा कि आप कोई भी चीज को 3D डायमेंशन में कट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, ठीक। अगर आप गन की शेप बनाना चाहो वो भी बना सकते हो। तो मेरे मन में एक आइडिया था कि व्हाई नॉट हम जो कैंडल्स हैं, वैक्स है, तो अगर मेरा बर्थडे है तो मेरे बर्थडे पे मेरे पेरेंट्स या कोई मेरे रिलेटिव्स मेरे सामने मेरा ही 3D क्लोन प्रेजेंट करे मेरे लिए वैक्स का, तो मेरे को कितना अच्छा लगेगा, हाउ वुड आई मतलब कि फील, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, लोग फटाफट खरीदेंगे। बट जब इस चीज की बात करते हैं तो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इट इज देयर, बट नेसेसरी रिसोर्सेज को साथ लाना, दैट इज नॉट विद मी, मनी। एंड ये एक ऐसा आइडिया है जो इजीली कॉपीएबल है। जिसके पास ज्यादा मनी होगा, जिस चेन के पास ज्यादा मनी होगा, वो इजीली उसको ओवरशूट कर जाएगा। बट अगर वो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी में कोई चीज लेके आता, चेन जब मोल्ड में लेके आता, दैट वुड उसको पेटेंट करवा के उसको सेल ऑफ करता, देन इट वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन एबल टू रीप बेनिफिट फ्रॉम इट। तो अभी मैंने याहू में क्या देखा लास्ट वीक कि एक AMC करके, AMC और समथिंग एल्स आप सर्च करना, एक रिटेल चेन है, उन्होंने क्या कंसेप्ट लॉन्च किया है कि आपकी बॉडी का वो 3D स्कैन करेंगे। उस शॉपिंग मॉल में जाओ, they will do a 3D scan of your body, you and your wife or you and your kid, or you, your wife and your kid, and उसी का एक छोटा सा प्लास्टिक का मॉड्यूल आपको बना के आपके सामने दे देंगे। जस्ट लाइक आपके पास स्पाइडरमैन का टॉय होता है, हमारे पास सुपरमैन का टॉय होता है, वी कैन गेट दोज काइंड ऑफ थिंग्स विद अस। इट मीन्स मैं तो अभी ABC सोच रहा था, किसी ने उसका Z भी सोच रखा है, इसको 3D प्रिंटर्स की एप्लीकेशन भी डेवलप कर दी है।
हाँ, बट इसमें भी दो चीजें होती हैं। जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आईपीआर पे मेरा ये सेशन नहीं है, मैं पूरा डील नहीं करूंगा इस पे, बट मैं थोड़ी सी बात कहूंगा कि अगर आज के कंटेक्स्ट में हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप अकेली सर्वाइव नहीं करेगी। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आपको इंटेलेक्चुअल को और आईपी को प्रोटेक्ट करके जब आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेन मनी एंड गेन फेम और सेटअप आर न्यू एंटरप्राइजेस। हाँ, एक और चीज होती है कि जो ये राइट्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड सारे इंडस्ट्रियल डिजाइन, दीज राइट्स आर नेशनलाइज्ड राइट्स। कि अगर मान लो जिस कंट्री में मैंने उसकी प्रोटेक्शन फाइल की है, मेरी अथॉरिटी उस कंट्री में उस पे हक है मेरा। तो अगर मान लो कि मैंने कोई चीज का पेटेंट फाइल किया है यूएस में, बट उसका इंडिया में फाइल नहीं किया, तो any person from India can use, copy and use that innovation in India and उसको मार्केट में ला। तो ये इन्वेंटर पे है कि वो अपनी आईपी को कहाँ प्रोटेक्ट करवाना चाहता है। तो ये लोग, बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक एरिया है जिसमें कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट पेटेंट डाटाबेसेस को, कि कौन कौन सी चीजें प्रोटेक्टेड डोमेन में है, कौन सी फ्री डोमेन में है, प्रोटेक्टेड डोमेन में नहीं है, और उसको क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू हम इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज अ वन ऑप्शन वी कैन गो अबाउट इट। ओके, देन अकॉर्डिंग टू ILO, another definition of entrepreneurs are action oriented, achievement motivated people who take risks to achieve the goals। तो अभी रिसेंट एग्जांपल है कि मैं जैसे ग्रीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे मैं PhD में वर्क कर रहा हूँ, होप सो कि वो पूरी हो टाइम बाउंड में, बट उसमें ग्रीन आईटी में आईटी का जो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट है उस पर मैं वर्क कर रहा था। तो वो जब सेशन लेता हूँ ICT मोड में, तो रिसेंटली क्या हुआ कि एक जलंधर में एक ओल्ड कॉलेज है, तो वहां पे मैं नाम नहीं लूंगा, उस कॉलेज के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी के, तो उनको पता लगा कि अमरदेव ग्रीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे सेशन लेता है, मे बी उसकी कुछ एज है उसमें। तो वो किसी के थ्रू, कोई उन्हीं के कोलीग हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में आए थे 2 वीक्स पहले, तो उन्हीं के थ्रू वो मेरे घर आए परसों, डे बिफोर यस्टरडे, एंड वो मेरे पास आया कि मेरे को कहते हैं कि अमर हमें बताओ कि ई वेस्ट के लिए हमने कैसे आगे बढ़ना है, ई वेस्ट मिटिगेशन के एरिया में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया, सर ई वेस्ट मिटिगेशन में एक तो सिंपल एरिया है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि ई वेस्ट को डिस्कार्ड कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। कि हमारे पास मोबाइल फोन है, एक घर में आई एम श्योर 7 से 8 मोबाइल फोन होंगे मिनिमम, 4 तो है ही, बट हमारे पास वो 4 साल पहले का मोबाइल है, बट हमें ये पता नहीं है फेंकना कैसे है। तो अगर मैं 130 करोड़ की इंडियन पॉपुलेशन मानूं तो इट मींस 130 करोड़, अगर एक मोबाइल भी माने तो 130 करोड़ मिनिमम है। तो अगर आप गूगल पे मेरा ग्रीन आईटी वाला सेशन देखेंगे तो उसमें मेरा परसेप्शन है अपना कि मोबाइल फोन का जो ई वेस्ट आने वाले टाइम में इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मेजर कॉज ऑफ कैंसर, ये आने वाले टाइम में बनेगा। ठीक, तो क्योंकि 130 करोड़ का पाइल बना के देखो कितना हाई बनेगा, एंड उसमें से जो टॉक्सिन्स है वो कहाँ जाएंगे। अभी तो 1960s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, इंडिया उस टाइम पे स्टार्वेशन, हंगर से सफर कर रहा था, पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, तो वो मिक्स हो रहा है वाटर टेबल से, तो अभी उस कारण कैंसर आ रहा है। बट नेक्स्ट रीजन इज गोइंग टू बी द योर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो जब मैंने उनसे ये सेशंस में बात कर रहा था, उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अमर बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे 2 ही चीजें सजेस्ट की। एक, आप सिंपल सा काम कर सकते हो कि आप ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर बना दो अपने एरिया में। मींस कलेक्शन सेंटर मींस जैसे आप मैं ये भी नाम नहीं लेना चाहता कि दिस इज अ ICT मोड, कि कुछ कंपनीज जो है हमारी रिसाइकलिंग में है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि चाइल्ड लेबर एरेडिकेट हो। क्यों? क्योंकि जो वहां से मटेरियल पिक करते हैं वो रैग पिकर्स, वो उनका रॉ मटेरियल है, वहां से आपकी नई चीजें बनती हैं। ठीक, बट वो अलग कंसेप्ट है, उसको मैं अभी टच नहीं कर रहा। बट आई से कि नोकिया ने क्या किया था कि अपने सर्विस सेंटर में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर, छोटा सा एक डस्टबिन रखा है, ई वेस्ट बिन, कि अगर आपको पुरानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने डिस्कार्ड करनी है आप वहां प्लेस कर लो। बट ये चीज अभी भी विलेजेस तक नहीं पहुंची, अभी भी सिटीज तक नहीं पहुंची, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स तक नहीं पहुंची, सब डिवीजन तक नहीं पहुंची। तो एक तो मैंने उनको यही कहा कि आप उनके लिए कलेक्शन सेंटर बनो, उनसे नोकिया से, सैमसंग से बात करो कि उनके ऑथराइज रिसाइकलर कौन है, और वहां उनको वो मटेरियल सप्लाई करो। One thing is that. Second thing is that you go and study those companies
एंड अगर आपको लगता है कि आप एक रिसाइकलिंग प्लांट अपने एरिया में लगा सकते हैं, आप उन प्रोसेसेस को, टेक्नोलॉजीज को लर्न कर सकते हैं, तो आप खुद करो। बट उसमें आपको दो चीजें देखनी है। एक चीज देखनी है, क्या वो टेक्नोलॉजी पेटेंटेड तो नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव तो नहीं है। तो उसमें भी दो वे है। अगर कैपिटल इंटेंसिव है, अगर मान लो एक कंपनी है, उसने एक रिसाइकलिंग का मशीन लगाया, तो वो कहते हैं मैंने ऑनलाइन कोटेशन भी भरा है, तो वो पूछ रहे हैं मेरे को कि बताओ आपने डेमो कब लेना है 2 मशीन रिसाइकलिंग का। तो मैंने कहा वो मशीन का डेमो लेने का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसमें कई वेरिएंट्स होंगे मॉडल्स के। आपको पहले उस प्रोसेस को समझना है, तो फिर आप डिसीजन लोगे कि वेदर आई शुड परचेज दो मशीन और नॉट। तो अगर वो कंपनी बड़ी है तो आप उनके सिर्फ पार्टनर बन जाओ, इतना ही काफी। अगर वो कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप 2-3 मशीन आप अपने नोडो एंड पे लगा लो कि आप हमें ये कंपोनेंट सेपरेट आउट करके भेज देना, तो यू कैन गो फॉर दैट इज देयर। सो एंटरप्रेन्योर्स आर एक्शन ओरिएंटेड। ये मैंने एग्जांपल क्यों ली, ये एक्शन ओरिएंटेशन में ली कि उनका 2 दिन बाद, आज सुबह ही मेरे को, कल एसएमएस आया को, आज सुबह फोन आया कि अमरदेव मेरे 2-3 कंपनीज का दिल्ली में बताओ कौन सी ऐसी कंपनीज है जो इस काम में लगी हुई है, हमें वहां विजिट करके देखना। मींस मैं सेशन ले रहा हूं, मैं उसको 6 महीने से रिपीट कर रहा हूं, बट उनका एक्शन ओरिएंटेशन है। इट मींस ही इज ट्रूली इंटरेस्टेड। उनके पास मनी पावर, उन्होंने जापान और अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया भी विजिट किया है, उनके पास लाइक माइंडेड पीपल होंगे, ठीक। तो उन पे ईगो नहीं है कि आई एम अ प्रोफेसर एंड आई एम अ हेड। जिस कॉलेज में ये लड़का पढ़ा उसका फर्स्ट जो चेकिंग है उसमें मैं गया था। ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ ईगो। वहां पे आए, उनको जो मेरे से मिला लेके उसको वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। दे आर एक्शन ओरिएंटेड, अचीवमेंट मोटिवेटेड पीपल हु टेक रिस्क टू अचीव द गोल्स। ओके, जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, the entrepreneur has an enthusiastic vision, the driving force of an enterprise. Okay, what is vision and what is mission? Anybody? टीटीसी जोधपुर में मैं कोर्स करके भी आया था, मे भी कुछ पार्टिसिपेंट वही हों जो मेरे पहला कोर्स अटेंड कर चुके हैं। Anybody from TTC? Vision and mission, what is the differentiation between vision and mission? Okay, Lingias University, what is vision, what is mission, and what is the difference between the both? Lingias? Anybody? From Government Polytechnic Sapla? Sapla? What is vision? And what is mission? हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी सर, विजन मतलब आप फ्यूचर में कुछ सोच के चलते हो कि हमें चीजें ऐसे करनी है, और मिशन तो आपका स्पेसिफिक है, कोई गोल बिल्कुल स्पेसिफिक है। You are close. Anybody from this thing? Goal, target, and the vision is our future programs, what we visualize that at a particular time in future we will be doing, we will be achieving. That's it. When vision is long term. That's it. Vision is long term. If we go by dictionary meaning, it is दूरदर्शिता, आपकी दूर की सोच, foresightedness. That's it. And mission is your, to achieve that vision, the path you will follow, and based on your mission you will have your goals. Based on your goals you will have objectives, based on your objectives you will have sub objectives, क्योंकि एक एक्टिविटी के लिए भी आपके पास सेवरल सब एक्टिविटीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं आपकी एडमिशन प्रोसेस की, तो उसमें भी कई एक्टिविटीज हैं। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी मनी फीस कलेक्शन, फीस के लिए उसको डिपॉजिट करना बैंक में, क्लर्क ने शिफ्ट इशू करनी। सो इसी तरीके से विजन, मिशन के लिए गोल्स, गोल्स के बाद objectives, sub objectives you will have. When we say vision, it is for your 15-20 years planning, long term planning. जैसे NITs ने सभी ने बनाया था NIT 20, तो आज से 10 साल पहले, मतलब 2010 में बनाया था, 9-10 में, ठीक। मिशन आपका शॉर्ट टर्म। अब बट अगर आपने अचीव करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, एंटरप्राइज को आगे बढ़ाना है, तो आपका विजन एंड मिशन दोनों इन लाइन होने चाहिए, एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए। कि अगर मेरे पास सामने विजन में मेरे पास ये
बोर्ड भी पड़ा है, प्रोजेक्ट, इसके ऊपर मेरे पास राउटर भी है, एक्सेस पॉइंट है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, एंड पाथ मेरा फिक्स है कि आई कैन गो स्ट्रेट एंड बैक, बट आई डू नॉट नो वेदर आई हैव टू पिक दैट राउटर एक्सेस पॉइंट और आई हैव टू टर्न ऑन दिस प्रोजेक्टर. It means I have the path, but I do not have the clear vision. So I will waste my time and energy. Another thing is that I am clear कि हमें access point को उतारना है. I have not given the path. तो उसमें क्या है? Maybe I may follow the straight path, or I may go around this chairs, or I may go outside this room. After half an hour, come back. So again, if your mission is not clear, we will waste your time and energy. So vision and mission has to be in line. So the entrepreneur has an enthusiastic vision. That is the driving force and of an enterprise. तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा सोशल वर्कर्स की. कभी आप एनजीओ के ओनर्स को देख लो, उनकी एक प्लस भी होता है, वीकनेस भी होता है. उनका प्लस ये होता है, उनके एनजीओ उनका प्लस होता है, उनके एनजीओ उनका वीकनेस होता है. प्लस ये होता है कि वो किसी भी कारण से अपने काम से रुकते नहीं. अगर कोई उन्होंने डिसाइड कर लिया है, वो किसी अप्रूवल्स के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे. अगर अच्छा काम है वो दे विल गो अहेड. बट अगर उन्होंने पाथ की वो सारी चीजों को सही फॉलो नहीं किया तो उनका एनर्जी वेस्ट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, मेरा एक दोस्त है, वो पर्यावरण वेलफेयर सोसाइटी रन करता है पटियाला में. तो हम 2010 में मिले थे लाइब्रेरी के बाहर, जब मैंने पीएचडी अपना थापर से शुरू किया. तो लाइब्रेरी में मैं एक स्टेट सिविल सर्विस ऑफिसर थे मेरे दोस्त, हम दोनों बैठकर डिस्कशन कर रहे थे. तो उन्होंने हमें डांट दिया. तो दिस इज अ लाइब्रेरी, यू कांट शाउट और स्पीक सो लाउड इन द लाइब्रेरी. तो जब बाहर आए तो लाइब्रेरियन ने इंट्रोड्यूस किया थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद. तो उन्होंने कहा कि रजनीश, मीट अमरदेव, ये अमरदेव का नेचर तुम्हारे जैसा है. मेरे को कहा अमरदेव, ही इज रजनीश, इसका नेचर तुम्हारे जैसा है, तो मिलो. तो वो भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ कि वो हमें डांट चुका था अंदर, बट मेरे को कोई गुस्सा नहीं था, उससे गिला नहीं था, क्योंकि वो उसका पॉइंट सही था. तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट यू डू. ही सेड आई रन अ पर्यावरण वेलफेयर सोसाइटी. तो मैंने कहा कि उसमें क्या एक्टिविटीज करते हो. तो उसने कहा कि उसमें ट्री प्लांटेशन, ठीक, उसके बाद ओजोन डे, ओजोन डिप्लीशन को प्रिवेंशन पे, मलेरिया, थैलासीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन, ठीक. मैंने कहा रिसेंट कितने मेंबर्स हैं. कहते 13 लोग थे, 13 में से अभी एक्टिवली साइनिंग के लिए 3-4 लोग हैं, काम मैं अकेला करता हूँ. तो मैंने कहा अभी क्या एक्टिविटी करते हो. कहते मैं पीकॉक्स हैं थापर के अंदर, उनको दाना डालता हूँ. तो शाम को 5 बजे आना, तो मैं तुम्हें मोरों से, पीकॉक से मिलवाऊंगा. तो मैंने देखा तो वो दाना ही डालता था. तो मैंने कहा पैसे कहाँ से आते हैं. तो वो कहता पॉकेट मनी, पॉकेट से मिलते हैं. तो धीरे धीरे फिर मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया. तो ये देखा कि उसने अपनी एक गाड़ी रखी थी, उस टाइम पे स्विफ्ट थी उसकी, डीजल. तो वो उसमें सुबह ना 80 प्लांट परचेज करता है नर्सरी से. सब नर्सरी से उसकी जान पहचान है कि लगातार करता है, तो वो उसको कम पैसे में दे देते हैं. तो वो उसी में रख के, और एक लड़का है अपनी पीएचडी के जो फंड है उसमें से 5000 दे के, उसके माँ बाप नहीं है, उसको उसने रखा है, वो डिगिंग करता है पिट्स की. तो अंदर रूम कमरा लेके दिया हुआ है कैंपस में, वहीं पे रखता है और उसको 5000 देता है, उसको साथ उठाता है, और 1-2 दोस्त वॉलंटियर होते हैं साथ में पीएचडी वाले, उनको लेके वो किसी भी गाँव में निकल जाता है. उस गाँव में जाके डिग करके प्लांट करके आते थे. तो मैंने फिर उसके साथ जाना शुरू किया. तो हम सुबह 5 बजे निकलते थे, 6 बजे पहुंचते थे, और 6 से 9 तक प्लांटेशन करते थे, और 10 साढ़े 10 हम वापस आ जाते थे. तो मैंने ये देखा कि हमारी एवरेज 4 से 5 लोगों की रहती थी. 3 घंटे में हम 90 से 95 प्लांट्स लगा पाते थे एक्चुअली, पिट डिग करके. कई बार हम अखबारों में देखते थे कि 2000 प्लांट लग गए एक दिन में, 3000 लग गए. वो सारा फेक होता है फिगर. आपने अगर, वो मशीन्स नहीं है अभी इंडिया में, वो जो डिग करके आप पिट्स फटाफट प्लांट्स लगते जाए. तो उसमें हमने धीरे धीरे मैंने देखा कि इसका वर्क बहुत अच्छा है. बट जब हम गाँव में जाते थे, विलेजेस में, तो हमें ना लोग पूछते थे कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी से हो, क्या आप बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो. तो हम कहते थे हम वॉलंटियर्स हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है. तो फिर मैंने इसको एक चीज सजेस्ट की. मैंने कहा कि यू हैव टू कम इन मीडिया सो दैट द पीपल नो यू कि हु आर यू. तो उस रोज तुम अपने प्रेस रिलीजेस को रिलीज करो, बट एक प्रॉमिस आपको देना होगा कि आप बिना काम किए कभी प्रेस में अपनी नोटिंग नहीं भेजोगे. तो फिर हमने काम धीरे धीरे शुरू किया कि मॉर्निंग हम प्लांटेशन करते थे, 10 बजे वो अपने कोर्स वर्क में चला जाएगा, मैं अपने कोर्स वर्क में चला जाऊंगा. फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद वो अपना लंच जब होगा उसमें प्रेस रिलीज बनाएगा. इवनिंग में 5 बजे फिर हम इकट्ठा होते थे, 5 से 6:30-7 बजे तक हम सभी जो न्यूज़पेपर्स वाले थे उनको प्रेस रिलीज दे के आते थे. तो धीरे धीरे वो 7-8 न्यूज़पेपर्स में आना शुरू हो गया रेगुलर.
बट हमारा कमिटमेंट ये होता था कि जिस टाइम पे मैं उसके साथ प्लांटेशन में जाऊंगा तब मेरी खबर में नाम आएगा, अदरवाइज वो मेरा नाम भी नहीं डालेगा और ना मैं उसको फोर्स करूंगा। तो जब हमने ऐसा करना शुरू किया तो लोगों ने जानना शुरू किया। तो जब हम गांव में जाते थे फिर हमने पंचायत को साथ लेना शुरू किया कि उनको बताना शुरू किया कि हम ऐसा ऐसा काम करते हैं। तो फिर हमने शुरू किया क्रिमिनेशन ग्राउंड्स में। पहले तो प्ले ग्राउंड्स देखते थे, खाली एरिया जो बेजान था। फिर जब क्रिमिनेशन ग्राउंड्स में शुरू किया तो क्रिमिनेशन ग्राउंड्स में ये आया कि वहां पे भी डिवीजन है कि मुस्लिम का अलग है, सिख का अलग है, हिंदू का अलग है। तो वहां पे जो एक रिलीजन वाले कह रहे थे कि आप पीपल का पेड़ नहीं लगाना, और दूसरे रिलीजन वाले कह रहे थे कि आप यहाँ पे पीपल का लगा दो, कोई इशू नहीं। तो हमारा ये भी रहता था कि हम शेड ट्रीज भी लगाएं, क्योंकि वो घरों में तो हम उखाड़ देते हैं पीपल को बुरा मान के। तो वहां पे प्लांटेशन शुरू किया। जब हमने प्लांटेशन शुरू किया धीरे धीरे, तो हमने शाम को जाना शुरू किया पानी देना, कि एक हफ्ते तक उसको देख के भी आते थे। ऐसा नहीं है कि प्लांट कराए और उसको छोड़ दिया, कि एक हफ्ते तक आपने सरपंच को कहना कि आप इसकी कैटल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, मिनिमम मेक श्योर करो कि इसको कैटल्स वगैरह खाए ना जब तक ये चलता नहीं है पौधा। और उसके बाद दूसरा ये रहता था कि हम इवनिंग में जो जहाँ पे प्ले ग्राउंड में पानी देना शाम को शुरू किया। तो जब लोकलाइट्स होते थे बच्चे उनके, जब वो कुश्ती खेलते थे या वहां पे अपनी वो कबड्डी या अपनी कुछ ना कुछ गेम खेलते थे, तो उस टाइम पे उनको शर्म आना महसूस हुआ कि ये लोग बाहर से आके यहाँ पे काम करके जाते हैं और हम गाँव पे होके नहीं करते। फिर वो हमारे साथ आना शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे क्या शुरू हुआ कि लोग ट्रैक्टर्स लेके शुरू हो गए। हमने कीचड़ से पानी निकालना शुरू किया, उस पानी को प्लांटेशन में यूज करना शुरू किया। अब धीरे धीरे इस वर्क को देख के क्या हुआ कि थापर वो लड़का क्या करता था, उसकी पर्यावरण वेलफेयर सोसाइटी है, बट जब एक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक की आपकी सोसाइटी होती है, उसका एक लिमिटेशन होता है कि आप जो सोशल वर्क करोगे इस दायरे में करोगे। बट मैं कहता हूं कि यू कांट डिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ सोशल वर्क। घर का कूड़ा निकाला और घर के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। तो फिर उसने वो क्या करता था कि थापर यूनिवर्सिटी की एक सोसाइटी थी, उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेता था। अंदर जो एनवायरमेंट क्लब था उनका कोलैबोरेशन में वेन्यू ले लेता था, काम ये करता था और इसकी टीम। जैसे लोकल इजी डे है, इजी डे के जितने मैनेजर से उसकी फ्रेंडशिप थी, जो उसके बंदे फ्री थे 7-8 पीपल, जब हम ब्लड डोनेशन करते थे वो आ जाते थे। फिर हमने पॉलिटिशियंस को विजिट किया, तो पॉलिटिशियंस ने कहा कि आप ब्लड डोनेशन करते हो, हम आपको कितना पैसा चाहिए, 20,000 25 हम दे देते। तो हमने कहा कि हमें मनी नहीं चाहिए, व्हाट यू डू, आप रिफ्रेशमेंट दे दो, मिल्क एंड बनाना। तो उन्होंने मिल्क एंड बनाना लाने शुरू कर दिए। ठीक, नो डाउट कि उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपनी सोसाइटी का नाम PWS रख दिया। जैसे ये पर्यावरण वेलफेयर सोसाइटी था, उनका भी सिनोनिमस नाम था कि जो ये काम करता था इनडायरेक्ट बेनिफिट उनको भी थोड़ा मिल जाता था कि ये काम शायद वो सोसाइटी कर रही है, बट हमें कोई नुकसान नहीं था। वी वर एज फार एज वी आर डूइंग द गुड वर्क। जब देखा धीरे धीरे तो थापर यूनिवर्सिटी ने कितना अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने एक मेडिटेशन पार्क बनाया, उसकी पता नहीं 1 लाख के 2 लाख की फंडिंग, मिनिमम 1 लाख से ऊपर है, वो फंडिंग उसको देनी शुरू कर दी उसकी सोसाइटी को फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पार्क। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे उसी के साथ वाटर टैंकर एक परचेज कर लिया। ठीक, फिर उसने क्या किया, पटियाला का बस स्टैंड के बाहर वाला एरिया 200 मीटर अगर आप जाओ तो वहां पे उसने दोनों साइड प्लांटेशन शुरू कर दी। तो जब प्लांटेशन कर रहा था तो एक कोई पॉलिटिशियन आया कि इस खड्डों को हमने मिट्टी भरनी है, तो आप रुको, आप 2 दिन का टाइम दो, हम मिट्टी भर देते हैं, फिर आप प्लांट लगाओ। इसने कहा अगर आपने शाम तक करना कर दो, अदरवाइज मैं प्लांट खड्डों में लगा दूंगा। उसने सफाइयां करके खड्डे में प्लांट लगा दिए, रुका नहीं, ही डिडंट स्टॉप। बट क्या हुआ, वहां पे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन आया, उन्होंने उसके साथ सर्विस किया, प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे करते करते 1-2 दिन देखा कि ये बंदा जेन्युइन है, जील से काम कर रहा है, तो उन्होंने ये शेयर किया कि आई एम द पर्सन फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई नॉट यू बिकम द ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर इन पंजाब। तो उन्होंने एक फॉर्म पार्टनरशिप डीड रजिस्टर कराई उस लड़के ने, जो इजी डे थे, इजी डे कह रहा हूँ, यहाँ इजी डे, उन्होंने ट्रांसफर की रोपड़ में उस मैनेजर की, बट उन्होंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि हम पार्टनरशिप डीड करके ई वेस्ट कलेक्शन में एंटर होते हैं। और एक लड़के ने 2-3 एकड़ अपनी जमीन दे दी, तो 3 और एक चौथा लड़का, 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करवाई और काम शुरू कर दिया। एंड ऑथराइज्ड ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर फॉर 1 ईयर इन पंजाब उनको मिला। बड़ी कंपनी के बाद छोटे में ये पहले बंदे थे सोसाइटी वाले। अब यहाँ पे कहाँ पे फॉल्ट आया, एक अच्छा इनिशिएटिव वो लेके आया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव उसने लॉन्च किया फेसबुक में भी, और मेरे को कहा अमर इसको प्रमोट करके जितना कर सकता है, कार बिन्स, कारों में डस्टबिन।
₹150 उसका प्राइस रखा। कि अगर कार की अगर एक्सेसरीज की बात करें तो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की बात करूं तो मैं 400-500 का लगाता हूं। मिनिमम कोई एक्सेसरी आप लेने जाओ आपकी 600-700 से कम नहीं है। तो अगर 150 रुपए का है, अगर मार्केटर कोई 200-300 का भी बेचे, 400 का भी बेचे, आप छोटा सा बिन रखोगे। और मैं क्या फोरकास्ट करता हूं, अगर बिन रखोगे तो साथ में उसके नैपकिन्स की सेल्स भी आप बढ़ा सकते हो। एंड नैपकिन्स आर रिसाइक्लेबल। एंड उसके बेस पे वो आगे कंसेप्चुलाइज कर रहा था बस बिन का कंसेप्ट, कि बस में डस्टबिन होगा क्रिएटिव। बट अब क्या हुआ, अब फॉल्ट कहां पे आया? जब मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा था कि उनका विजन एंथुसियास्टिक होता है, कई बार वो मिशन से मिसलीड हो जाते हैं कि आप उसकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 जो भी है उसके अंदर आपने उसकी ऑडिटिंग करवानी जरूरी होती है, चाहे आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से करवाओ चाहे आप सीए से करवाओ। वो करता तो जेब से पैसा डाल के काम था, हिसाब किताब एक एक है, बट वो ऑडिटिंग नहीं करवा पाता था। तो मैं उसको कहता था कि हर वक्त कि ब्रदर तुम इस सोसाइटी की ऑडिटिंग करवाओ, क्योंकि जो अच्छे हैं टाटाज और बिरलास, इनकी 1 करोड़ की स्कॉलरशिप्स भी हैं। अगर कोई सोसाइटी 10 साल 15 साल अच्छा काम कर रही है एंड यू कैन प्रूव योर वर्क, यू हैव डन इट, दे गिव यू स्कॉलरशिप्स अप टू द ट्यून ऑफ 1 करोड़ रुपीज फॉर डूइंग द सोशल वर्क, गुड थिंग्स फॉर द सोसाइटी और नोबल वर्क। बट ये चीजें, एंड एनी पर्सन कैन नॉमिनेट एनीबॉडी। जैसे आपकी सोसाइटी काम कर रही है, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई कैन नॉमिनेट दैट दिस सोसाइटी इज वर्किंग एंड ही शुड बी checked on those parameter and if found suitable he should be given that work। तो वो क्या हुआ कि जब वर्क शुरू हुआ कलेक्शन का तो उसमें प्रॉफिट दिखा, तो 2 लोगों ने, पार्टनर्स ने उसके साथ आरटीआई डाल के व्हाट वर योर सोर्सेज ऑफ फंड्स इन योर प्रीवियस ईयर्स एंड हाउ यू यूज्ड टू मैनेज योर एक्टिविटीज, आपस में ही कंफ्लिक्ट आ गए। बट बिसाइड दिस कंफ्लिक्ट, इस कंफ्लिक्ट के बावजूद भी उसका काम नहीं रुका, वो अभी भी कर रहा है, धक्कड़ है ऐसे। नहीं वो नहीं मिलती थी। दैट वाज माय पॉइंट। क्योंकि एक बाबा है पंजाब में, उन्होंने 1,04,000 समथिंग दरख्त लगाए हैं। मैंने उनका सीवी किसी से लिया था 2003 से 7 के बीच में, और उनको पद्मश्री मिला हुआ है। वो अलग है, वो अलग है, हाँ सीचेवाल वो अलग है, वो अलग बाबा जी है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो लड़का है इसने भी बहुत पेड़ लगाए हैं, 80,000 से ज्यादा इसने भी लगाए हैं। बट इसका और उनके वे में क्या फर्क है, आजकल आप सीचेवाल वाले बाबा जी को भी देखो, वो अपने वीडियो टीम साथ लेके जाते हैं। They need a media, they need a person who should come forward, because they can generate the message to the society. Message and proof. Yes. They are actually doing it. अभी एक और proof and एक और आपसे शेयर करता हूं कि 2010 से देयर वाज अ इंटरेक्शन हेल्ड इन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली। वहां पे राकेश भारती मित्तल आए थे जो एयरटेल के चेयरमैन हैं, और साथ में उनके थे भास्कर चैटर्जी, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड मेरे को उस मीटिंग में अटेंड करने का मौका मिला था। हाँ आईएएस है, हाँ हरियाणा के। उन्होंने रिटायर होके उसके बाद वो डीजी बने हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, तो वो वहां पे थे। तो 2010 में वो शेयर कर रहे थे कि उनसे कैबिनेट मिनिस्टर ने ये पूछा कि आप हमें एक डाटा दो कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने सर से कहा कि ऑनरेबल सर, ना तो मैं दे सकता हूँ वो डाटा, ना कोई और बता सकता है इंडिया से। तो उन्होंने कहा 1 साल का अगर आप हमें टाइम देते हो तो हम एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपको बताएंगे। तो वो निकल के आए, तो देयर आर 13 to 14 lakhs रजिस्टर्ड गवर्नमेंट फर्म्स जो है, 13 से 14 लाख रजिस्टर्ड फर्म्स हैं। उसमें से 650 जो है मिनी रत्नास और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। एंड उसमें से सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो उस टाइम पे जो उन्होंने शेयर किया था आज से 1 साल पहले, वो ओएनजीसी का था। ठीक, तो इन्होंने ये कंसेप्ट लेके आए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सीएसआर का, कि हर कंपनी का अगर वो बिजनेस ले रही है सोसाइटी से तो उसने सोसाइटी को गिव बैक भी करना है। तो ही सेड कि हमने पहले 3 स्लैब्स बनाई, ए बी सी। जो ए कैटेगरी प्रॉफिट मेकिंग में है वो कुछ ज्यादा परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट, बी में मीडियम, सी वाले उससे कम अपना सोशल वर्क में डालेंगे। तो फिर उन्होंने एवरेज आउट कर दिया, क्योंकि ट्रेस करना बहुत टफ था कौन सी कंपनी किस टाइम पे ए से बी में जा रही है, बी से ए कैटेगरी में जा रही है।
बेस्ड ऑन देयर बिजनेस ऑपरेशंस। तो उन्होंने उसको 2% कर दिया कि एवरी एंटरप्राइज हैज टू इन्वेस्ट 2% ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। तो उन्होंने फिर हमसे क्वेश्चन पूछा कि कैन यू गेस व्हाट इज द 2% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ओएनजीसी? कैन अ वाइल्ड गेस? हाँ, कितने करोड़ अप्रॉक्सीमेट? हाँ, 10-12 करोड़। तो उन्होंने ये बताया 2% ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ओएनजीसी इज 600 करोड़, वन कंपनी। एंड फिर उससे क्वेश्चन हुआ, फिर क्या हुआ धीरे धीरे कि जो सोशल वर्क क्या आता था, अभी पॉलिटिशियंस को ही जाता था। दैट आई कांट कमेंट, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट। ओके, बट होगी, ऐसे तो नहीं चल रही। ओके, तो जब हम बात करते हैं उसकी, जब हम बात करते हैं सीएसआर एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो वो पर्टिकुलरली गांव में जाकर विजिट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने बताया कि जिस तरीके से करते हैं, तो उसकी मतलब डेली अटेंडेंस भी ली लोगों की, उनको पढ़ाया एंड उसके बाद वापस आ गए। तो वो कई बार उनको मतलब लोकल विधायक वगैरह से कुछ फंडिंग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो सोसाइटीज होती हैं, ये प्रॉपर रजिस्टर्ड होती हैं या इनकी मतलब? हाँ, एवरी अगर उनका नॉमेनक्लेचर, अगर आप सांझ केंद्रास की बात करो तो सांझ केंद्रास की भी जो कमेटी है, आपको भी पढ़ो जाके, उसमें स्कूल के प्रिंसिपल्स भी होंगे, कॉलेज के लोकल प्रिंसिपल्स भी होंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी होगा, पुलिस वाले लोग भी होंगे, अदर्स भी होंगे, तो पब्लिक सारे वो जैसे कोई भी स्टार्ट करके ऐसा कर सकता है। हाँ, यू हैव टू, बट आपका मिनिमम, हाँ, आगे मैं उसके थोड़ा सा और भी आगे आपको अपडेट करता हूँ। फिर उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, जैसे सोसाइटीज अपने भाई भतीजावाद शुरू हो गया, जैसे मैं कंपनी में एम्प्लॉय भी हूं और मैंने अपने रिश्तेदार को वर्क दिलवा दिया, तो उस कर्व करने के लिए, सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो आपकी सीएसआर कमेटी होगी, उसका जो डायरेक्टर होगा, ही हैज टू बी अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इस बात से ये है। और अभी इंडियन कंपनीज एक्ट को भी मॉडिफाई कर दिया गया, उसमें भी ये आ गया है। एंड किस सोसाइटी से वर्क लिया है उसको आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन भी करना है, और कंपनीज को अपनी वेबसाइट पे भी डालना है कि वो सोशल एक्टिविस्ट के दायरे में भी ले आए। कि अगर वो कहते सारे करप्ट होंगे फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमने मेक श्योर किया है कि ज्यादा से ज्यादा चीज पब्लिक डोमेन में हो, ताकि उसको क्वेश्चनिंग हो पाए। ठीक, तो इसमें एक ये आपके लिए अच्छा है कि अगर, अच्छा, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिस्टिंग भी डेवलप कर रहा है कि जो सोसाइटीज लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स से फंक्शनल है, आपके प्रॉपर रिकॉर्ड्स को वो वेरीफाई करके उस लिस्टिंग को अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, सो दैट द कॉर्पोरेट्स कैन चूज द अमंग द एनजीओ कि कौन सी एनजीओ अच्छी रेटिंग वाली है, अच्छी है, ट्रस्ट वर्ती है, क्रेडिट वर्ती है। सो आपको उस डोमेन की तरफ भी जाना है कि आप अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक्स में कुछ सोसाइटीज रजिस्टर करवा के उसके लिए भी जा सकते हैं, उसके अंदर भी आपका ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी हो सकता है। तो उसके लिए दिस इज अनदर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, जिसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं। ओके, तो एंटरप्रेन्योर हैज एन एंथुसियास्टिक विजन, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। जो मर्जी हम कहें, उसका विजन बहुत स्ट्रांग होता है। एंटरप्रेन्योर्स विजन इज यूजुअली सपोर्टेड बाय द इंटरलॉक कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइडियाज नॉट अवेलेबल टू द मार्केट प्लेस। नॉर्मली वो चीजें जो होती हैं उसकी अनकॉमन होती है, जैसे कार बिन है, तो वो मैंने नहीं सोचा, आपने नहीं सोचा, बट ऑब्जर्वेशन है, सिंपल ऑब्जर्वेशन, ही हैज थॉट ऑफ इट। द ओवरऑल ब्लूप्रिंट टू रियलाइज द विजन इज क्लियर, उसके माइंड में क्लियर होता है आगे वो क्या करने वाला है 5 साल में, 10 साल में। हाउएवर डिटेल्स मे बी इनकम्प्लीट, फ्लेक्सिबल एंड इवॉल्विंग, चाहे वो चीजें धीरे धीरे उसके साथ जुड़ेंगी, चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू। ओके, देन द एंटरप्रेन्योर प्रमोट्स द विजन विद एंथुसियास्टिक पैशन। तो एंटरप्रेन्योर ऐसा नहीं कि अपने विजन के साथ अकेला ही चलता है, वो जब भी कोई इवेंट करेगा, चाहे मैं जाऊं ना जाऊं, वो मेरे को फोन जरूर करेगा कि हमारे अर्थ आवर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, थापर की हम 15 मिनट लाइट कट कर लगाएंगे, तुमने कल पहुंचना है। एंड अगर वो फोन, ये मैं नहीं सोचूंगा कि मेरे को ही आया, मैं किसी और दोस्त को लगाऊंगा, उसको भी आया जिसके टच में, चाहे हम सोचेंगे कि नहीं यार छोड़ दो, वो आ पाएगा अगर नहीं बिजी होगा, बट एंटरप्रेन्योर नहीं छोड़ता। अभी अनदर एनजीओ है पहल, वो जलंधर बेस्ड है, वो सर 3rd स्टेज कैंसर से सफर कर रहे हैं। ऑफिशियली जो है 2nd टाइम रिपीटेड है, अनऑफिशियली जो मेरे को पता है, मेरा पर्सनल टच से 4th टाइम रिपीटेड है, उनको 3rd स्टेज कैंसर है।
और 10 घंटे दिन में सोसाइटी के लिए काम करते हैं, 4 घंटे जॉब के लिए, 2 घंटे फैमिली के लिए, 6 घंटे की उनकी स्लीप है। ये उनका 24 आवर्स का स्प्लिट अप है। मोर देन 80,000 ऑफ यूनिट ऑफ ब्लड रेज कर चुके हैं लाइफ में, उससे ज्यादा। और उसके बाद आपके जो नबार्ड के अंदर जो आप कह रहे हो पिकल्स मेकिंग, सर्फ मेकिंग, वो सिखा चुके हैं लेडीज को। और उनकी लेडीज जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स ट्रेंड है, वो सर्फ डिटर्जेंट बना के वो सेल ऑफ भी कर रही है, चीपर देन व्हील एंड क्वालिटी बेटर देन व्हील। अब वीकनेस है उनका, वीकनेस है कैसे? अब मैं चाहता हूँ क्लस्टर बना दिया जाए। अब मेरा आइडिया है कि जैसे चिप्स है, एक चिप्स 25 रुपीज का, 30 रुपीज का आप यहाँ पे भी ले रहे हो, हरियाणा में भी ले रहे हो गांव में, और वैष्णो देवी पे भी मिलता है। तो उसमें ऐसे ही क्या खास है? आलू तो हमारे खेतों में भी होते हैं, बट हमने उसको सिस्टमाइज नहीं किया। व्हाई नॉट वन विलेज इज मेड अ हब फॉर मेकिंग पोटैटो चिप्स, एंड द पर्सन हु कैन बी मेड अ, कुछ किसान है वो किसानी में लगेंगे, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाएंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसान में। हाँ, वही है, बट उनको वो एक स्ट्रक्चर में नहीं ला पा रहे। जैसे उनको डर है, जैसे एनजीओ वाले पॉजिटिव बहुत होते हैं। मैंने एक बात कही शुरू में, मैं सर को कह रहा हूँ कि सर व्हाई नॉट हम उनका जो सर्फ का ब्रांड, यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, बहुत अच्छा नाम है, कुछ लिफाफे में छापते हैं जो यूनिक नेम है, मैं कहता हूँ कि सर उसको ट्रेडमार्क फाइल किया था फॉरवर्ड, कि ट्रेडमार्क फाइल होगा तो कल को वो अच्छा बिकेगा तो कोई कंपनी खरीद भी सकती है, उसी का मनी मिल जाएगा। आजकल तो नाम ही आपके 15-15, 20-20 लाख में बिक जाते हैं, बट उनको डर ये है कि हमारे तुम जो मर्जी करो आगे, बट कमर्शियलाइज कोई बंदा इसका बेनिफिट ना उठाए। उनके मन में ये फियर है कि नहीं, ही इज रेडी टू शेयर, कि वो ये कहते हैं कि आप मेरे साथ रहो, जो मर्जी मेरे से सीख लो। क्योंकि आईआईटी कानपुर में मेरा एक स्टूडेंट है, तो वो मेरा स्टूडेंट एनआईटी में था, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में था, फिर उसने एमबीए वहां से की। लंबी कहानी है, मैं उसमें से शॉर्ट बता रहा हूँ। तो उसके बाद पीएचडी अभी कर रहा है, तो उसने ही हैज टू कंडक्ट इंटरव्यूज ऑफ द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, तो उसमें मैंने फिर उनका इंटरव्यू करवाया था। तो उन्होंने पूरा अपना बेझिझक होके वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी घर वाले कपड़ों में। तो वो कहते थे कि अगर किसी ने मेरे साथ सीखना है मेरे साथ, तो आप मेरे साथ 24 घंटे मैं जैसे उनके साथ बैठता हूँ, हर हफ्ते जाता हूँ तो एक बार मिलता जरूर हूँ। तो वो क्या था कि उनको फोन आते हैं कि हम आपकी लाइफ पे बुक लिखना चाहते हैं। वो कहते हैं अमर कि ये मेरे जिंदगी पे क्या किताब लिखेंगे, जिसने किताब लिखनी है वो मेरे साथ रहेगा, मेरे को जानेगा। 2 घंटे में मैं कैसे बता दूंगा कि 24 घंटे में मैं क्या करता हूँ। एंड उनका दायरा मैंने कैसे देखा है कि जब दायरा, हाउ आई जज एंड हिज पोजेसिवनेस, कि मैं जलंधर में जब गया तो एक ब्लड डोनेशन था कैंप, हम वहां पे गए, ब्लड डोनेशन कैंप शुरू करवाया, ब्लड डोनेट किया। ठीक, उन्हें कहा मैं खुश था कि हाँ अभी आज ब्लड डोनेट कर दिया मैंने और शुरू करवा दिया। कहते अभी हमने एक काम और करना है। वो वहां से निकल के अपने चाइल्ड लेबर स्कूल में ले गए। वहां पे एक कोई लड़की थी, उसको एज अ टीचर अपॉइंट करना, चाइल्ड लेबर स्कूल में ले गए। चाइल्ड लेबर स्कूल के बच्चों को एक क्लास में इकट्ठा किया, वहां पे पुराना सा टैंक पड़ा, तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए हाउ दे डू दे सेंसिटाइज अ यंगस्टर, कि यहाँ पे एक वाटर कूलर पड़ा है, उसका इनॉग्रेशन तुमसे करवाएंगे। ठीक, पानी शुरू करवा दिया, बच्चों को बैठा दिया। अब बच्चों से पूछा इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ, पहले टीचर्स को बताया, टीचर्स लाए, कि टीचर्स ने उनकी कॉपीज खोली हैं बैंक की, जिसमें कि जो सरकार की तरफ से पैसा आता है वो महीने के महीने डिपॉजिट करते हैं। बच्चों को कहा कि आप इंट्रोड्यूस करो। तो एक बच्चा उठा, उसने बताया कि मेरा नाम बबलू है और मैं एक स्लम से हूँ, तो मैं ना जुआ खेलता था, और मैंने जुआ कहाँ से सीखे, तो ये सर जुआ मैं सीखा अपने बड़ों से। मैं बड़े कौन, कहते पापा लोग से। तो कहते एक दिन ये सर आए, इन्होंने कहा कि आप अगर मेरे स्कूल में आओगे तो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े दूंगा, अच्छी अच्छी बुक्स दूंगा। तो कहते हमने कहा आप हमारे पापा मम्मा से बात करो। तो कहते इन्होंने बात की, ये हमें लेके आए यहाँ पे स्कूल में, इन्होंने हमें ड्रेस दिलाई, बैग दिलवाया, उसके बाद इन्होंने हमें डांस सिखाया, इन्होंने आर्मी के हमें टैंक दिखाए। डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर है, वहां पे वो क्या करते हैं, आर्मी से मिलके एक एग्जीबिशन कर देते हैं, वहां पे छोटे बच्चों को ले जाते हैं अपने चाइल्ड लेबर स्कूल के। फिर कहते हैं उसके बाद इन्होंने हमें डांस सिखाया, पेंटिंग सिखाई, फिर हमने डांस कंपटीशन में भाग लिया कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चों के साथ, और हम फर्स्ट आए। दैट इज स्लमडॉग मिलियनेयर, आई वुड से ही इज डूइंग दैट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वहां पे एक स्टेटमेंट दे दिया कि ही इज अमरदेव एंड ही इज फ्रॉम चंडीगढ़, अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो ये आपको इंजीनियर बनाएंगे।
कि मेरे को रोप इन किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ठीक, कि अगर तुम अच्छा पढ़ोगे 1 से 5वीं तक, तो 5वीं तक तुम्हारा खर्चा सरकार से आ रहा है, 6ठी से 10वीं तक मैं तुम्हें सरकारी स्कूल में डालूंगा, और उसके बाद डिप्लोमा में तुम्हें अपने खर्चे पे करवाऊंगा। अब क्या हुआ, उन्होंने उसके बाद अगले दिन मेरे को अपने घर पे बुला लिया कि अमर तुम 11 बजे मेरे पास आना, मिलना है। 11 बजे मैं घर गया उनके, 11 बजे जब घर गया तो एक लड़की और 2 लड़के उनके घर पे बैठे हुए। जब उनके घर बैठे हुए उन्होंने कहा कि अमर ये उस बैकग्राउंड से हैं जहां पे मतलब कि पढ़ाई का माहौल नहीं है, और ये मेरे चाइल्ड लेबर स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, और 6ठी से 10वीं इन्होंने किया हुआ है सरकारी स्कूल से, अभी मेहरचंद पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर रहे हैं, और इनकी 5-5 सखी हैं, और तुम देखो इनको कैसे पढ़ाना है, कैसे टाइम निकालना है और पढ़ाना। What he was saying a day before, he has proved to me that next day. He has done it. लोग उनके बारे में बहुत नेगेटिव भी बोलते थे, मैं क्योंकि उनको 2007 से उनके बारे में सुनता आ रहा था, मेरा रिलेशन उनसे 2012 से शुरू हुआ, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैं आपके साथ सेशन ले रहा हूं, ऐसे मैंने आईसीटी मोड में एक प्रोग्राम किया था, इंडक्शन प्रोग्राम मेहरचंद में, तो वहां से एक यंगस्टर मोटिवेट होकर निटर NITTTR से एमटेक करने आए थे, तो वो मेरे को मेस में खाना खाते हुए मिलते थे। तो उन्होंने कहा कि सर आप जलंधर लखबीर सर के पास जाते हो, उनके एनुअल डे था, वहां पे मैं भी गया था, लखबीर सर भी गए थे, आधे घंटे के लिए हम गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे करते हो कि आप चंडीगढ़ में भी हो, यहाँ जॉब भी करते हो, सैटरडे संडे जलंधर मेरा होम टाउन है तो घर भी जाते हो, फैमिली को भी टाइम देते हो, गुड़िया भी आपकी पैदा होने वाली है, तब होने वाली थी, वाइफ प्रेग्नेंट थे, और सर के साथ भी काम करते हो, हाउ डू यू मैनेज? इट कैन बी डन, यू हैव टू हैव अ विल पावर, यू हैव टू मेक योर ऑल थिंग्स एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू प्लान। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप एक छोटा सा काम कर दो। कहते क्या? मैंने कहा आपको कहीं नहीं जाना, आपके वहीं पे 3 ऐसे बच्चे हैं और आप उनको बताओ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें सप्लियां है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, ये 5-6 सब्जेक्ट हैं, इसमें से कौन कौन से पढ़ा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैं केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा लूंगा। ऐसे उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, 10 दिन पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने कनाडा में उनका एमटेक में एडमिशन हो गया, निटर से भी छोड़ के चले गए। बट अनदर ऐसे ही उनके एक और पूनम मैम थे, वो कंटिन्यूसली मेरे टच में थे कि मैंने कोर्स अटेंड करना है, तो कुछ वो अभी कंट्रेक्चुअल पोजीशन में थे तो उनके हेड्स उनको आने नहीं देते थे, तो जो मैं कह रहा हूँ कि 2 हफ्ते पहले आए हैं, तो उनके हस्बैंड और वो दोनों प्रोग्राम अटेंड करके गए हैं यहाँ पे। तो वो मैम को मैं कहता था कि आप लखबीर सर के साथ काम करो, आपके घर से तो 2 किलोमीटर है, मेरे घर से वहां पे भी 8 किलोमीटर है, और चंडीगढ़ से जलंधर भी मैं जाता हूँ। तो वो कहते थे कि मेरे को मीडिया में आना पसंद नहीं है। मैंने ठीक है, आपको अगर मीडिया में आना पसंद नहीं है तो आप ही के कॉलेज स्कूल में बच्चे हैं पॉलिटेक्निक में, आप उनको पढ़ा दो। तो अब उन्होंने पढ़ाना उनको शुरू कर दिया छुट्टियों में। दैट इज हाउ अ चेन बिकम्स, कि एक उन्होंने इग्नाइट किया लखबीर सर ने मेरे को, वो घूम के यहां से चीज वहीं पे जा रही है। एंड उसके बाद उन बच्चों का मेरे को फोन ये आना शुरू हुआ कि सर आप हमें प्रोजेक्ट बताओ एक यूनिक सा, कौन सा करें। बट वो मेरी लिमिटेशन थी कि अब मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड को मैंने छोड़े हुए काफी टाइम हो गया, तो मैं उनको उस लेवल पे गाइड नहीं कर सकता। बट आगे मैं कोई ऐसा टीचर ढूंढ रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के एक अच्छे प्रोजेक्ट पे उनको गाइड कर पाए, तो उनके साथ जोड़ दूंगा। फिर धीरे धीरे उनको थोड़ा फंड लखबीर सर हेल्प कर देंगे, थोड़ा मैं कर दूंगा, तो उनका एक शॉप सेटअप करवा देंगे। एलईडी डिस्प्लेस का बहुत काम है। अगर हम एलईडी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करें तो देखूं सेवरल करोड़ का जो है मार्केट खाली पड़ा। That's it. Okay. So with persistence and determination, the entrepreneur develops strategies to change the vision into reality. तो अपने विजन को धीरे धीरे अपने रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। The entrepreneur takes the initial responsibility to cause a vision to become a success. तो एक पर्सन लीड लेता ही है। Okay. Entrepreneurs take prudent risk. They assess the cost, market, customer needs, and persuade others to join and help. तो वो सारा कुछ मार्केट एनालिसिस भी करते हैं। तो जैसे मैंने लखबीर सर की बात की, तो वो कैसे करते हैं, हाउ डू इट। उनमें वो एसोसिएट प्रोफेसर है पंजाबी के, बट वो बना रहे हैं सर्फ। मैंने पूछा सर हाउ डू यू डू इट, तो वो कहते हैं उसका लैब में भेज के उसका केमिकल कंपोजिशन निकाल लो। क्या है, रॉ मटेरियल लेके अपनी कंसंट्रेशन में मिक्स करके बना दो। जैसे आपने टाइम की बात की, टाइम जैसे आपने कहा संडे बिजी हो गए, मतलब जैसे मैनेज कर लिया पूरे वीक को, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो टाइम तो डेफिनेटली ये होती है, टाइम तो देना ही, उसके बिना कहीं आप गाँव में भी जाते हैं, किसको पढ़ा भी रहे हो तो
तो सर नेक्स्ट जो फंडिंग वाली बात है वो कैसे करेंगे? हाँ, फंडिंग वाले में दो चीजें हैं। एक तो फंडिंग वाली बात होती है, सबसे पहले तो सेल्फ होता है, आपको अपने आप को प्रूव करना है। फिर उसके बाद एजेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम भी यहाँ पे करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप जो आप ले सकते हो। ईडीआईआई क्या करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईडीआईआई अहमदाबाद को निमेट बनाया है, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एजेंसी फॉर ट्रेनिंग, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एजेंसी फॉर ट्रेनिंग। उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि आप 3 डेज का एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप कर सकते हो बच्चों के लिए, जिसकी फंडिंग थी आज से 1 साल पहले 13,500 रुपए एक प्रोग्राम की, अब वो 20,000 रुपए हो गई। तो आप वहां पे अप्लाई करके फंड लेके बच्चों के लिए प्रोग्राम्स कर सकते हैं। उस प्रोग्राम में आप ऐसे एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं। जब मैं ईएसी करता हूँ निटर से, तो उसमें मैं लखबीर सर को जरूर रखता हूँ किसी न किसी सेशन में। वो मेरा दायरा होता है कि उनको मिलवाने का बच्चों से, और बच्चों से मैं बैकग्राउंड पहले शेयर कर देता हूँ कि उनकी ये कैपेबिलिटी है, आप पूछो क्या क्या पूछे खुल के, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे वो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आपका सर्फ मेकिंग वाला, जहाँ वो उनका नाबार्ड फंडेड है, वो कोई पैसा नहीं लेते किसी एज एनजीओ। तो वो बच्चे जो इंटरेस्टेड होते हैं वो दोबारा उनके पास चले जाते हैं डिटेल्ड नॉलेज के लिए। मेरे प्रोग्राम से उनको बेसिक नॉलेज मिल गया। अब निटर का मैंडेट क्या कहता है, अब NITTTR का मेरा वीकनेस क्या है, अवर मैंडेट सेज यू हैव टू ट्रेन पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग कॉलेज टीचर्स, एंड वो जो फंडिंग है वो फंडिंग है बच्चों के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग को क्लब करता हूँ, क्योंकि 20,000 में प्रोग्राम करना फिजिबल नहीं होता। अगर मिनिमम मैं कोई प्रोग्राम करूँ आपकी TADA मिला के, ऑनरेरियम मिला के, तो उसकी कॉस्ट 30,000 पे जाती है मिनिमम। आप लंच का भी प्रोवाइड हम करते हैं सारा कुछ में, तो ये है। तो उसमें क्या रहता है कि मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए कर सकता हूँ, बट अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, जहाँ एक NGO करती है, उनके लिए ये लिमिटेशन नहीं है। बट अभी उन्होंने ये कर दिया कि NGO को उन्होंने फंड देना बंद कर दिया है इस साल, क्योंकि उनको ये है कि NGO मिस यूज कर रहे हैं। इस पे जो उनके हेड हैं EDI के, जो मतलब कि इसको डील करते हैं फंडिंग को, मेरी उनसे काफी बहस बसाई हुई। मैंने उनको ये कहा कि सर इट इज अ वीकनेस ऑफ अवर सिस्टम कि हम उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे कि वो फंड सही यूज हो रहा करेंगे। बट कई ऐसी NGOs है, अगर वो एक जगह नहीं करेंगी तो कई और जगह करेंगी, बट वो अल्टीमेटली तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रही है। ये तो इसी गवर्नमेंट में इसी, और उसमें एक प्रॉब्लम भी हो रही है। प्रॉब्लम क्या हो रही है उसमें कि कुछ NGOs जो सही काम नहीं कर रही सोसाइटी, जो उनके पैनल पे हैं, वो फिर भी फंडिंग ले रही है। तो अभी फिर मैंने वो प्रपोजल उन सोसाइटी वो बना के भिजवाऊंगा जरूर एक बार, कि वो उनकी रिव्यू कमेटी में फिर दोबारा रिव्यू जरूर हो। बट एज अ कॉलेज आप उनके लिए एलिजिबल है। जैसे आपने मान लो वो मांगेगी कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी में, तो आप कुछ आपने एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप किया अपने कॉलेज में, जहां आपने वो नहीं किया तो आपने कोई एंटरप्रेन्योर से इंटरेक्शन हेल्ड करते हैं बच्चों के लिए, वो करते हैं। आपने हमारा कोई प्रोग्राम लगाया है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंप हमारा लगाया, या एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई सेटिंग अप ऑफ EDICS सेल पे लगाया है, तो वो सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा साथ में कि ये कोऑर्डिनेटर का प्रीवियस बैकग्राउंड। फिर आपको वो रिव्यू करेंगे पूरे इंडिया से कितनी एप्लीकेशन आएंगे, मे बी आप 10 प्रपोजल बनाते हैं, उसमें से 2 दें आपको फर्स्ट टाइम, फिर आप उसको अच्छे से करोगे, फिर अगला मिलेगा सेकंड में। पहला प्रपोजल EAC का है। सेकंड प्रपोजल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का, 6 वीक्स का। उसके लिए फंडिंग होती है 1.5 से 2.5 लाख। फिर होता है 2 वीक्स FP का, उसकी होती है 2.5 से 3.5 लाख। ऐसा ही 6 वीक्स का टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जिसमें आप एकेडमिक्स प्लस एक इंडस्ट्री से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फंडिंग इज देयर। ये मैं भी एक बता रहा हूँ, इससे 3-4 चीजें और हैं, बट हमें पता नहीं है, हम एक्सप्लोर नहीं करते, और हमारे पास टाइम नहीं है। ये ओके। Entrepreneurs take prudent risks. They assess cost, market, customer needs, and persuades others to join and help. An entrepreneur is usually a positive thinker and a decision maker. Okay. अब मुद्दे पे आते हैं, जो मुद्दा मेरे मन में काफी चलता है और मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि ये क्यों जरूरी है। नीड फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक ही कंसेप्ट में मैं फोकस करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर नहीं करेंगे तो आने वाले इंडिया का हाल बहुत अलग सा होने वाला है। रीजन बीइंग
सिंपल पहली एग्जांपल, बहुत हार्श एग्जांपल से मैं शेयर कर रहा हूं कि एक सिंपल पीटीयू से शुरू करता हूं। एक स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 250 से मोर देन 250 कॉलेजेस हैं। ठीक, एक कॉलेज में मिनिमम एवरेज 100 सीट्स है एक ट्रेड की। 250 इंटू 100, 25,000 इंजीनियर एक स्ट्रीम में एक साल में, और ऐसी 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं, मोर देन 5 प्राइवेट मिला के। तो 40-45 हजार इंजीनियर एक स्टेट से निकल रहा है एक ट्रेड में एक साल में, और आप उसको जॉब दे नहीं पा रहे। ठीक, अब यहां तक भी ठीक है, जॉब नहीं दे पा रहे, और अगर पेरेंटल इनकम है, आप घर में वो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, बट वो पढ़े नहीं रह रहे। तो क्या हुआ कि जहां मेरे वाइफ है, उनके सामने जो गुड़िया थी, उसका उन्होंने मैरिज तय किया, उनके पेरेंट्स ने। पंजाब पुलिस में उनके फादर हैं, तो इटली से लड़का था, तो इटली जाना है उसने। ठीक, तो क्या हुआ कि 1 महीना रह गया था उसका जाने में। तो खबर हमें मिली, फोन पे हमें बताया गया यहाँ पे कि जलंधर में एक रात को पुलिस ने चेकिंग किया, कार को स्टॉप किया, और चेकिंग में 3 लोग पकड़े गए कार में, जो कि एटीएम को थेफ्ट करने आए थे, एटीएम को तोड़ने के नजर से आए थे। ठीक, अब वो लड़का कह रहा है कि हमें फंसाया गया है, क्योंकि वो इटली जाना था, और सामने वाली लड़की जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, उसके साथ उसका रिलेशन, शादी तय है। अब वो पूरा दिन रो रही है, क्योंकि उसका क्या वीक पॉइंट है। उसके फादर ने जाके पूछा अपने ऑफिसर से, पंजाब पुलिस के अंदर सीनियर, तो उन्होंने कहा कि ये इसका पहला केस नहीं है, ये 3rd-4th अटेम्प्ट है, और इसका ब्रदर तो रेगुलर है, ये 1-2 में है इसका नाम, जो बड़े भाई का। वैसे सिंपल रियल एग्जांपल। तो अगर हम उनको जॉब नहीं दे पाएंगे, तो जब एक अनपढ़ बंदा चोरी करता है और एक पढ़ा लिखा चोरी करता है, उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत। तो मीडिया भी वो वेल प्लान। ठीक, अब सेकंड एग्जांपल लेता हूं। मैं गोल्डन टेम्पल जा रहा था, ठीक, 2000 मैं पेपर चेक कर रहा था तब, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस के। तो ये बात है 10-11-2000, मैंने पार्ट टाइम लेक्चरर काम किया 10-11 2010 और 11 की है। तो उसमें क्या था कि एक वेल बिल्ट गुरसिख बॉय रिक्शा ड्राइव कर रहा है। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तो कहता है कि आई एम बीकॉम ग्रेजुएट। ठीक, तो मैंने कहा जॉब, कहीं जॉब नहीं किया। तो वो कहता मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो वो 5 लाख रुपया ब्राइब मांग रहे हैं, आई कुड नॉट पे। तो ही सेड कि आप मेरे को ऐसा करो, कोई बंदा मेरे को 1 लाख रुपया दे दे एंड आई हैव टू किल समबडी, तो मैं माइग्रेंट जो है बाहर से, अदर स्टेट से, उनको हायर करूंगा, 50,000 रुपया दूंगा, 50-60 हजार वो लेंगे, किल कर देंगे, बाकी का मेरा प्रॉफिट। आई विल डू दैट। ये उसका कन्फेशन था, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक, 2 एग्जांपल्स। तीसरा, अभी मेरे घर में थेफ्ट हुआ है 10 अप्रैल को, मेरे क्वार्टर में 42 में, और वो भी एक वेल प्लान्ड था। किसी बंदे ने पूरे 1 साल से मेरी रीडिंग नोट कर रहा है कि ये किस टाइम पे आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है। और 8 अप्रैल को मैं अपनी वाइफ और गुड़िया को लेके आया, और सिलेंडर वगैरह लेके आया, गाड़ी लेके आया। तो उन्होंने सोचा पता नहीं ये इतना कुछ लेके आया, पता नहीं घर से सेपरेट होके आ गया, इतना कुछ लेके आया होगा। अब वो डिटेल्स शेयर नहीं करूंगा कि क्या रहा उसमें, और मैंने उसको, पुलिस को सारे क्लूज भी दे रखे हैं, क्योंकि मैं भी उसी माइंड पे चल रहा हूँ, बट पुलिस फिर भी उसको पकड़ नहीं रही। हाँ, मेरे नहीं, ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ पुलिस, यूटी के अंदर, और दिन में इट वाज टाइमिंग वाज 1:30 to 4:30। कुछ भी नहीं। अब देखो क्या कि मैंने वाइफ से पूछा कि जब मैंने हमारा पीएचडी का मेरा मॉनिटरिंग मीटिंग था, रूटीन, इट इज आवर रूटीन मॉनिटरिंग मीटिंग। तो रूटीन मॉनिटरिंग मीटिंग में गए, तो मेरे एक दोस्त जलंधर से गाड़ी ला रहे थे, तो मैंने कहा मेरे पास गाड़ी है, आप बस से आ जाओ, हम डेराबस्सी चलेंगे, डेराबस्सी हम रुक जाएंगे रात को, मैं बाकी टीचर्स की वाइफ और बच्चों से अपनी वाइफ को मिला दूंगा, गुड़िया को, आप अपना गाइड से वर्क कर लेना, सुबह हम इकट्ठे वापस आ जाएंगे। तो डेराबस्सी से चंडीगढ़ आना टफ है, वो ये रूरल एरिया में जो थापर का कैंपस आया है। तो हम चले गए, तो वहां पे हमारा रहने का अरेंजमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। बट गाइड का, उन्होंने बाहर जाना था, को गाइड जो थे हमारे, तो उनका वीजा जो पासपोर्ट था वो पटियाला आया। तो उन्होंने कहा हमारा तुम्हारा रहने का अरेंजमेंट कर दिया है, हमें जाना है पटियाला, क्योंकि वो हमारा पासपोर्ट आया। तो मैंने कहा सर अगर आप रुकोगे तो वो सर रुकेंगे, तो उनके लिए मैं रुकूंगा, अदरवाइज हमारे रुकने का मतलब नहीं है। तो हम उसी दिन निकल आए।
तो सर को 4 बजे वोल्वो चढ़ाया, 4:30 पहले बाहर से ही मैं घुमाने ले चला था अपनी वाइफ को, अभी चंडीगढ़ आए, चलो चिप्पड़ चिड़ी है, एक मॉन्यूमेंट बना है वो देख के आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं पानी पी के चलते हैं, बस अड्डे के नजदीक ही है 1 किलोमीटर। तो हम जब घर पानी पीने गए तो देखे तो दोनों ताले टूटे हुए, सेंटर लॉक्ड, जाली का भी और अंदर का भी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा कि कोई गोल्ड वगैरह तो नहीं रखा था? तो मेरा कड़ा और एक रिंग होता है मैं पहन के रखता हूँ, और उनका टॉप्स थे, वो कहते टॉप्स अंदर ही थे। मैं व्हाट वाज इट्स कॉस्ट? तो वो कहते 35,000। अंदर गए देखे तो थे नहीं, तो फटाफट मैंने 100 नंबर डायल किया। पुलिस बहुत इफेक्टिव है, विद इन 10 मिनट्स आ गए, सारे लोग आ गए। इतने में मेरे वाइफ ने अंदर देखा, जब देख दुख के आए तो उन्होंने देखा कि उनको टॉप्स नीचे गिरे हुए मिल गए। अब पुलिस जो एफआईआर लॉन्च कर रही थी, दे स्टार्टेड एम्फेसाइजिंग मी कि आपके टॉप्स तो मिल गए, अब छोटी मोटी चीज रह गई तो आप ना मिसिंग का लिखवा दो, गुम का, है ना। देयर इज इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ थेफ्ट, हाउ कैन आई से इट इज अ मिसिंग? गया क्या? अब एस्टोनिशिंग फैक्ट है, गया क्या, पुराने 3 मोबाइल फोन थे जो संभाल के रखे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड सैलरी के, ई वेस्ट मेरे को पता नहीं था मिटिगेट कैसे करने हैं ठीक, वो 3 फोन गए। एक दोस्त है वो मेरा बहुत क्लोज है, अजीज है, तो उसका मैं पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ था तो उनको पूरा कवर किया था चंडीगढ़ में। फिर उसके बाद उसकी शादी पे बहुत काम किया एज अ ड्राइवर, उसकी गाड़ी भी चलाई, उसकी सिस्टर की भी शादी की अभी जनवरी में। मैंने पेटेंटी लीव पे था बट उनके दोनों की शादी की। जब शादी की तो उसने मेरे को 2 वॉचेस गिफ्ट की थी, वो गई। ठीक, मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे मदर को वाइफ को गिफ्ट लेके दिया था, पर्स, वो गया। उनके बाहर से गिफ्ट भेजा था उनकी मासी जी ने, वो गया। और मेरा एंगेजमेंट वाला कोट पैंट गया। कि चोर भी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि कुछ मिला नहीं तो कपड़ा ही लेके गया, कोट पैंट उड़ा के लेके गया। ये हाल है, मैं बता रहा हूँ। सच है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, इतनी जो जॉब मिलता है वो लेने की कोशिश करता है। और जैसे आप बोल रहे हो सकता है आने वाले ये एक कहानी का सकता क्या करेगा। अच्छा, अनदर एग्जांपल देता हूँ, इससे और क्लोज आता हूँ। अपना पर्सनल दोस्त, मेरा पर्सनल दोस्त है। अब देखो एक मनी की इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। एक हमारा दोस्त है, दोनों दोस्त हमारे इकट्ठा, मैं और लवली में पढ़ा, फर्स्ट बैच पास आउट। मेरा दोस्त भी वहीं पे पढ़ा, वो बढ़िया सेटल हो गया, बर्कलेज में चला गया। बेवॉच सीरियल का जो हीरो है उसकी कंपनी है, वहां पे चला गया एज ए सेल्स प्रोग्रामर यूके में, न्यू कैसल में। उसका सैलरी होगा 4 से 5 लाख पर मंथ। उसी का क्लासमेट जो कि डीएवी, उसके फादर जो सिविल हॉस्पिटल में स्वीपर थे, स्वीपर डाउन उस पोजीशन पे थे, ठीक, हेल्पर पोजीशन पे। हम मिले कैसे? हम होशियारपुर से हर साल एक बार चिंतपूर्णी पैदल जाते थे 40 किलोमीटर, ठीक। तो वहां से दोस्ती बनी थी। अब वो लंदन चला गया, मेरी दोस्ती इसके साथ रह गई, अब भी चल रही है। अब वो कैमरा, बीए ग्रेजुएट है, इंग्लिश में है, बट वो कैमराज इंस्टॉल करता है। अब जब उसके फादर की डेथ हुई लास्ट दिवाली वाले दिन, लास्ट ईयर, अब वो कहता है कि वो ग्रेजुएट है बट उसके ब्रदर जो है वो 12th पास है। तो वो कहता है कि मैं बड़े भैया को जॉब दिलवाऊंगा पापा की जगह, मैं नहीं लूंगा जॉब। मैंने कहा ठीक है, मैंने सोच ले, तू तेरे को शायद प्रमोशन भी मिल जाएगी, तो उसको हेल्प कर देना बाद में मनी से। कहता नहीं, मेरा मन अलाउ नहीं करता, पहले जॉब भैया की। ठीक, चलो उसका केस वो कर रहा है, उसके लिए भी बहुत दिक्कत आ रही है उसको। अब मैंने उससे ये पूछा, कैमराज लगवाने थे अब मैंने घर पे, तो मैंने चंडीगढ़ से रेट लिया, जो चंडीगढ़ से रेट लिया और जो उसने रेट दिया वो 5,000 रुपये कम था। तो मैंने ये डिसाइड किया मैं कैमरा उससे लगवाऊंगा, क्योंकि मैं लगवा के पैसे उसको पूरे दे दूंगा। एक मेरा चैरिटी भी हो गया और उसको वर्क भी मिला, और अगर मैं वैसे पैसे दूंगा तो वो मेरे से लेगा नहीं। वो आया नकोदर से, हम दोनों ने मिलकर अपने कैमरास फिट किए, अब बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अच्छे से कर दिए, जिसमें सारी बिल्डिंग की सिक्योरिटी होगी। बट अब उससे जब बात हो रहा था, वो कह रहा अमरदेव, मनी, जब तक फादर थे ना, मनी का वैल्यू नहीं पता लगा। जिस दिन वो नहीं थे ना साए पे, जब क्रिमिनेशन पे पैसे गैदर करने थे, उस टाइम मनी का वैल्यू पता लगा। तो वो कहता कि मैं क्यों नहीं करूंगा, वाई शुड नॉट आई डू अ रॉन्ग थिंग, टेल मी वन गुड रीजन। So it is the responsibility of every one of us, as a teacher, as a neighbor, as a friend, as a family member, कि हमने सभी को साथ लेके चलना है, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट दिलाएं या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। ठीक, इसमें कुछ और चीजें मैं करता हूँ, वो यहाँ पे मैं शेयर नहीं करूँगा। ओके, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारी जो बैलेंस, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो भी वो भी तभी बैलेंस होगी जब आप अपने पोटेंशियल को यूज कर पाओगे। ओके,
तो अब हम आते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। तो नेचर पे, जब हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पीपीटी, थैंक यू। व्हेन वी से वेज एम्प्लॉयमेंट, इट इज सेल्फ सैचुरेटिंग। आपको वेज मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है, आपको पता है 6th पे कमीशन 7th पे कमीशन आ जाएगा, बढ़ जाएगा, आपके पास मोटिवेशन होता नहीं, हम उसी में चलते रहते हैं। ठीक, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी सेल्फ जनरेटिंग है, आप आगे भी सोचते हो आगे किसको दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता जॉब छोड़ दो, मैं भी जॉब में हूँ, बट जॉब में ही आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, उसमें कई तरीके हैं। ओके, स्कोप वेज एम्प्लॉयमेंट में लिमिटेड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अनलिमिटेड है। ओरिएंटेशन वेज एम्प्लॉयमेंट में आपका रूटीन टाइप वर्क है, जिसमें आप एक स्टेटस को रखते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, गाड़ी पे आओगे, गेट वाला आपको सलाम ठोकेगा, आप उसको खुश हो जाओगे और चले जाओगे, ऐसा नहीं। आधे से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की चीजें मैंने अपने गेट वालों से सीखी है। जब वो कहते हैं कि हम साथ में ना फोटोग्राफी का काम करते हैं, भैया आप हमें बताओ लोन कैसे लेना है, और जब उनके लिए लोन का मैं फॉर्म उनका भरवाता हूँ और जो दिक्कतें उनको आती है उनसे सुनता हूँ, दैट इज प्रैक्टिकल लर्निंग। बाकी तो थ्योरी से पढ़ाऊंगा ऐसे। ओके, तो रूटीन टाइप, स्टेटस को, प्रॉब्लम अवॉइडिंग। तो नॉर्मली उसमें क्या होता है कि हम चीजों को करते हैं, रूटीन टाइम वर्क में हम कहते हैं जैसा चलता है उसको ऐसा चलने दो। डिपेंडेंट, हम एक सिस्टम पे डिपेंडेंट है, एग्जामिनेशन तभी शुरू होगा जब आंसर शीट मेरे पास आएंगे। ठीक, ओके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे इट इज अ क्रिएटिव, इनोवेटिव, आप अपने क्रिएटिव बेंट ऑफ पॉइंट को भी यूज करते हो, आप इनोवेट भी करते हो, नए प्रोडक्ट्स लाने की भी कोशिश करते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, सिस्टम को डिजाइन करने की कोशिश करते हो, आप इंडिपेंडेंट अपने डिसीजंस खुद लेते हो। सेटिस्फेक्शन थ्रू कंप्लायंस, वेज एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई हमें कोई ऑर्डर देता है, हमारे प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर या कोई, हम उसको करके खुश होते हैं, वो हमें शाबाशी देते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छा है। बट इन केस ऑफ योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, थ्रू परस्यूइंग अर्ज, कि आपके मन की जो इच्छा है उसको करते हो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, अदरवाइज जितनी मर्जी शाबाशी मिल जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कंट्रीब्यूशन कंज्यूम्स नेशनल वेल्थ, हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सैलरी ले रहे हैं तो हमारा जो टैक्सेस से पैसा कलेक्टेड है गवर्नमेंट के पास, वहां से हमारी सैलरी आ रही है, हम उस वेल्थ को ले ही रहे हैं, बट वहां पे है थ्रू परस्यूइंग योर जनरेट्स नेशनल वेल्थ। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आप पैसा लेके आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, सेल ऑफ करेंगे, लोगों से पैसा जनरेट करेंगे। ठीक, अर्निंग फिक्स्ड एंड सब्सिस्टेंस, आपकी फिक्स रहेगी अर्निंग, उसमें ग्रोइंग एंड जनरेटिंग सरप्लस, आप अपने जब अपने खुद के लिए काम करते हो आप फिर उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो। स्टेटस, वहां पे आपकी एम्प्लॉय रहती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपका स्टेटस एम्प्लॉयर का रहता है। ओके, ये नेक्स्ट स्लाइड, हाँ यहाँ से हो गया, हाँ आगे आगे आगे, थैंक यू। ओके, भारत रत्न एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और उनका एक स्टेटमेंट है कि और ओरिएंटेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हैज टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द स्कूल्स। टीचर्स नीड टू टीच द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन नेशनल डेवलपमेंट इन द स्कूल्स। During college education, student must be exposed to business development opportunities and must be trained towards creation of new enterprises. तो इसमें भी हम क्या सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट दे दें और एक हम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दें, वो काफी है। अगर आप चाइना को स्टडी करो तो वहाँ पे स्कूल्स में भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, काम होता है। आप कभी देखो, मैंने एक स्पीकर लेने गया मार्केट से, तो वो फेंटा की बॉटल टाइप है, चाहे वो कॉपीराइट की इंफ्रिंजमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, बट वो फेंटा का स्पीकर है, उसमें आप पेन ड्राइव लगा लो, आप मेमोरी कार्ड डाल दो, जो मर्जी कैसे। तो इट मीन्स कि आपको बच्चों को स्कूल में बताना है एंटरप्रेन्योरशिप के, कम से कम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बताओ, ट्री प्लांटेशन ही बताओ। गवर्नमेंट, आपको पता हो अगर गवर्नमेंट को आप करो तो एवरी ईयर आफ्टर इंस्पेक्शन गवर्नमेंट रीइंबर्स यू 100 रुपीज फॉर द सक्सेसफुल प्लांटेड ट्री। तो आप एनएसएस के अंदर वो क्यों नहीं कर सकते? कमिश्नर से मिलके आप उसको आगे पुट फॉरवर्ड करो प्रपोजल को एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को। ओके, तो उसमें प्लांटेशन करवाओ, खुद पहले इन्वेस्ट कर दो कॉलेज फंड से, बाद में आता रहेगा। उसमें लखबीर सर बहुत अच्छी एग्जांपल लेते हैं, अगर कॉलेज फंड से हम कुछ भी कर सकते हो, तो पर्सनल कर दो, हम पर्सनल कर दो। अगर उनकी लक्कड़ ही बेचोगे ना, 4 साल बाद सर ने निकाला था कि जितनी बच्चे की हम लगाते हैं 20 लाख की आमदन हो जाएगी। सर ने एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया हुआ लखबीर सर ने। जो मेरा एनालिसिस बेस्ड प्रोजेक्ट था वो मतलब सर शिक्षा अभियान में हम जाके पढ़ाया है हमने। नहीं, उसमें वीक क्या होता है, अब देखो सिंपल एग्जांपल है, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली एबल्ड बच्चों की ट्रेनिंग होती है कंप्यूटर स्किल्स और उसके, ठीक। अब वहाँ पे एक बच्चा हमेशा मेरे पास आ जाता है कि वो कहता है कि सर मैं यहाँ पे ऑफिशियली नहीं कमिट कर रहा हूँ, अनऑफिशियल ये मेरा पर्सनल वर्क है। ओके, तो वो कहता है कि सर आप मेरे को जॉब दिलवाओ।
बट उसमें स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो बोलता बहुत अच्छा है और बात बहुत अच्छे से करता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है टांग से, अपनी लेग से। अब मैंने इसको कहा कि तुम्हें क्या सिखाते हैं, वो कहते हैं एक्सेल और वर्ड सिखाते हैं। तो मैंने सोचा यार उससे मेरा ऑफिस का काम बहुत ज्यादा होता है, अब मैं डिपार्टमेंट को अपने बार बार नहीं कह सकता, कितनी बार कह चुका हूँ, बार बार नहीं कह सकता कि आप मेरे को क्लर्क या कुछ दे दो, अगर ठीक है मिलता है ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं मेरा वर्क नहीं सफर होगा। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जेब से उसको कुछ पैसे देके इवनिंग टाइम में अपने घर के टाइम पे उससे वर्क ले लिया साथ बैठा, और उससे उसकी लर्निंग भी हो जाए। तो मैंने जब टेस्ट करने के लिए बुलाया, तो जब टेस्ट करने के लिए उसको बुलाया तो वर्ड के जब नाम टाइप कर रहा था, मैंने पूछा वर्ड आता है अच्छे से, कहता आता है। जब टाइप करने लगा पहले तो उसके हाथ कांप रहे, तो उसके बाद जब टाइप किया तो उसने 10 नेम दोबारा रेपिटेटिव टाइप कर दिए। जो चीज मैं 10 मिनट पे टाइप करता हूँ उसने 4 घंटे लगाए, बट मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आई हैव टेकन माई ओनर्स कि उस लड़के को मैं ट्रेन करके पैसे भी दूंगा, वर्क भी लूंगा और उसको इतना केपेबल बनाऊंगा, वो जॉब भी देके उसको लेके। बट आफ्टर इम्पार्टिंग हिम नॉलेज देन आई विल से सम पेट्रोल पंप वाले को कहूंगा कि चलो यार इसको अपने डेली वर्क को रख लो, या किसी और। ऐसा नहीं कहूंगा कि सीधे जाके कि जाओ फिर यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी बेइज्जती हो और निटर का भी नाम बैठ। बट क्या हर बंदा ऐसा करता है? क्या हर ऑर्गेनाइजेशन जो आप कह रहे हो कि आप पढ़ा के आ रहे हो, क्या आप उसका इम्पैक्ट जज करते हो? एफिशिएंसी तो करते हैं, अकाउंट तो हम सारे करते हैं कि हमने 100 लोगों को ट्रेन कर दिया, कॉलेज में जाके लेक्चर दे दिया कर दिया, बट 100 में से कितने लोग एक्चुअली केपेबल बने और जॉब ले सकते हैं? तो आपको थोड़ा थोड़ा को उठा के आगे चलना है। ओके, पैराडाइम शिफ्ट। जो प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर की बात करें तो प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर है प्लानर, ऑर्गेनाइजर, कंट्रोलर, मोटिवेटर, रिस्क टेकर, स्टेक होल्डर, प्रॉफिट मेकर। तो वो प्लानर अच्छा है, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोलर है जो अभी पहले ये डेफिनेशन प्रचलित है। बट जो अगला 21st सेंचुरी एंटरप्रेन्योर है वो विजनरी है, आगे सोच रखने वाला है, लीडर है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, स्ट्रेटेजिस्ट है, अपनी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनाता है, लर्नर है, सीखता है, बिल्डर है, बनाता है, अचीवर है, एंड वैल्यू प्रोवाइडर, प्रॉफिट भी देता है। तो कॉम्पिटेंसीज, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, सबसे पहले आपकी सिस्टमैटिक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर मैं सोशल की CSR फंड लेना है अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इट मींस आपका CSR का प्रपोजल स्ट्रांग होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जो बी प्लान होता है, बी प्लान में क्या होता है, बिजनेस प्लान में आप प्रॉफिट दिखाते हो कि ये काम से ब्रेक इवन कब आएगा, आप 3 साल के बाद कॉस्ट कवर हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होगा। बट इसमें आप दिखाओगे कि सोसाइटी को बेनिफिट कितना हो, कितना जल्दी और किस लेवल पे, और उसका मॉनेटरी टर्म में क्या लेवल हो सकता है। ठीक, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसका होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, असर्टिव, जो कहता है उसमें करने में अपने आप को सक्षम रखता है और करता है, परसुएशन, लोगों को भी परसुएड करता है, यूज ऑफ इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेटेजीज, जहां जहां उसको लगता है लोगों को अपने साथ लेने के लिए कोई स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो भी करता है, मॉनिटर भी करता है, फोरसाइटेडनेस हमने बात की है। सजेशन फॉर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, मेरे को लगता है कि हम साथ साथ काफी चीजें कर चुके हैं उसमें है ही। तो मेरा सबसे पहले सजेशन ये है कि आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नॉलेज बच्चों को जरूर दें, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, सबसे पहले उसकी नॉलेज जरूर दें, चाहे आप गूगल से दें। हर स्टेट में एक पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर है, PIC है, हरियाणा में हरियाणा स्टेट काउंसिल है, आपका सेक्टर 4 या 5 में पंचकुला में, पंजाब का मैक्सिपा में है, ऐसे ही आपका राजस्थान का है। तो आप उनके सेशन एक करवा सकते हो, ठीक, वो कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। देन एट द NSS लेवल यू कैन डू, आपके NSS लेवल है। फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात की, आप EDII अहमदाबाद से भी फंड ले सकते हो। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन ऑलवेज कम अप टू NITTTR एंड मी एज अ पर्सनली और एज अ ऑफिशियली आल्सो। Okay, thank you very much. I hope I have cleared all the concepts I wish to in this context. Now I come to TTC Jodhpur. Any questions? Any questions from TTC Jodhpur or any feedback? TTC Jodhpur? No questions. Thank you. Okay, thank you. Government Polytechnic Sampla? GP Sampla? No, sure. sir. Any questions? Any feedback? Hello. Hello, Hanji, sir. Sir, we are thankful for your speech, sir. We learned a lot. From Lingas. Okay, sir. Yes, sir. No, I said we are thankful to your speech. It was excellent. We learned a lot. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Have a nice time. Thank you, sir.
Now I hand over to. Valediction पे चलते हैं. Okay. अभी आ Okay. जाओ valediction. हाँ, we come to the valediction. We will be starting with the valediction, and I request Dr. Bedi to be with you. चलो कुछ नहीं करो. इन्होंने तो evaluation performance. हाँ जी. We have Tulsi ma'am also with us, and we welcome. I welcome ma'am. She is coordinating. I was very class like we are welcoming you. आप उधर बैठ जैसे आपको. आज हो जी. तो इन्हें चुके इधर रखना है. Voice नहीं रखना है. अच्छा इतना attendance. अच्छा. हाँ जी. So, well friends, good afternoon. I think we are now towards the closing of this program, and we have reached the valedictory session because Dr. Bedi initiated this program, so I would request her to kindly give a brief of what has transpired during the 5 days. Then if we do have the chief guest at your end, we'll take the feedback of the teachers first, and then listen to the chief guest at various centers, and then we'll have the vote of thanks. So this is going to be about 30 to 40 minutes valedictory session, and I'm sure the local coordinators have distributed the evaluation performer to all the participants, and they have already filled in those evaluation performer. If not, kindly hand over the evaluation performer to all the participating teachers so that they can fill in. It will take only 5 to 7 minutes, so you can fill in the performer, and then we have the valedictory session. So TTC Jodhpur. Yes, ma'am. हाँ जी, आप मैम अरुण कुमार मोयल सर हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर आएंगे मैम. हाँ जी, आपको they will be coming in 5 minutes. इवैल्यूएशन परफॉर्मा आपने भर लिया है टीटीसी जोधपुर. ओके. जीपी सांपला. जीपी सांपला. Ma'am, we have yet not received. Our coordinator has gone to get it. अच्छा अभी आपको मिला नहीं है. ओके. But it is available with the coordinator or not? Yes, it's available. Okay. And Lingyas Institute? आपके participating teachers कहाँ पे हैं? Lingyas Institute? Hello. हाँ जी. Yes, ma'am, we are here right now. I only can see about 10 to 12 people. Yeah, that's true. Like we have been sitting from last 2 hours. We are gone out for some refreshment. But the valedictory session was scheduled. Yeah, they are coming back. They are coming back. Okay, they are coming back. So yes. Have you received evaluation performer? Not yet. She has got it, yeah. Okay, the coordinator has the evaluation performer or not? Giving, ma'am, giving. Huh? Giving. Okay. Do we have any chief guest with us for the valedictory session? No, ma'am. Okay, fine. दो ही है ना. India's TTC. Okay. 5 मिनट दे दो इन्होंने बस. ओके जी. तो मैं जेडे अपने खाने इंटरनल और बोला था. रैयर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਆਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੂ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀਨ ਬੰਦੂ. ਹਾਂ, ਦੀਨ ਬੰਦੂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ. ਦੀਨ ਬੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ.
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ पिछले वीक ਵੀਰਵਾਰ 1 month or 15 days 15 days and Dr. Dhamija ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ he's out of station ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅੱਜ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਐਮਟੈਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੁਕਰਾਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੁਕਰਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ये मेरे को ना फ्राइडे से चेंज हो गया फ्राइडे इवनिंग नहीं पर ठुकरालो कौन ता कर देंगे ना जहाँ मनु ने डॉक्टर धमीजा ने मनु जाने के लिए मिलते हैं एकदम फॉर्मेशन डॉक्टर धमीजा ना करते नहीं है इस तरह वो इन्फॉर्म करते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत पेशेंट पे गए या कुछ भी चीज होता है ना तो मेरे को सीधा मैंने इन्फॉर्म करते हैं हमेशा मैंने मेरे को ये चेंज करना है मुझे पता है वो बाहर ही है लेकिन आज कैंसिल कर उसको आई थिंक ओके वो सीपीएस ही है किन स्पीकर दे रहे हैं able to fill in the performer Lingyas Institute okay some more time is needed yes ma'am a little more. okay 2-3 मिनट परफॉर्मा ज्यादा छोटा है हाँ ये छोटा ही है ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ सिर्फ सैंपल में तो लगा मैंने चलो ਜੀਪੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ मनीषा ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਈਮੇਲ थोड़ा सा कर दिया था उसके बाद आगे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦੋ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ 41 ਦਿੱਤੇ 41 सैंपल ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ 41 ਤੋਂ 28 हो रहे सैंपल
valedictory session. I would first request Dr. Bedi just to give us brief of what has transpired during the last 5 days. Thank you, Dr. Doshi. As you all know, this 1 week program on the induction training program through ICT started on 15th of June. And as I was mentioning earlier, that we in this course are having a mix of topics on pedagogical aspects and interdisciplinary topics. Looking into that, on very first day, technical and vocational education system in India, policy initiatives and role of teachers in meeting challenges was for this topic. Dr. Rajiv Gulati from Hardron interacted with the participants. Then during this course, the pedagogical topics like instructional planning and delivery was taken by Dr. Sunil Dutt. Creativity and innovation, Dr. Rakesh Vats. Instructional methods, wherein we had discussed about case study, brainstorming and seminars, and setting of question papers. I myself interacted with you on that topic. Oral communication skills, Dr. P.K. Tulsi, Professor and Head Education Management Department, she interacted today itself. For entrepreneurship development and industry institute interaction again, Amardev, assistant professor in EDIC department from this institution, they interacted today itself for this program. And e-content generation and distribution, Dr. Maitri Datta, professor and head computer science department, she interacted with you. We had watched screened films on managerial skills and sustainable development by our worthy director MP Punia. Though we could not have interaction on these two things, but you must have seen that especially managerial skills, all these skills like leadership skills, positive attitude and all, they are depicted through PowerPoints. They are well related with the real with the examples from the day-to-day life also. And then we had a panel discussion and expert panelists Shri Amit Dhaka, IAS from Managing Director PSIEC Chandigarh, Dr. MP Punia, Director NITTTR, and Dr. P.K. Tulsi, Professor Head Education Management. They were the panelists, and that the observations was very practical type of things have emerged that even the teachers can implement at their own level. True, I won't say that we can cover all the expectations. There may be certain policy or other things, changes may be desired, but there are certainly certain things which even the classroom teacher can make a part of his day-to-day teaching and develop certain soft skills among the students. So this is all which is covered in this 1 week program. I hand over the things to Dr. Tulsi. Okay, thank you, Dr. Bedi. Now, I think we'll first listen to, we are going to receive your written feedback, but we will request the teachers at TTC, maybe 2 to 3 teachers, they can provide the feedback. How was the experience? What are the changes which you would desire in this particular program? So over to TTC.
Okay, अभी audible हूँ कि नहीं हूँ? Okay. Thank you very much for the feedback. I'll now request GP Sampla. Any participant would like to give the feedback? Over to GP Sampla. Okay, Lingyas. Okay, GP Sampla अभी connected नहीं है, तो I'll request Lingyas Institute. Kindly request 2 to 3 faculty members to share their experience. Hello? Ma'am, I'm Radhakrishna. Hello? Anji, good afternoon. Good afternoon, ma'am. I'm Radhakrishna from English Department, LGVKS. Hello? Anji, please continue. Yeah, ma'am. Basically, most of the things in this session was very much not. Sorry? Hello? Now it's fine? It's fine now? Is it fine now? Okay. Actually, ma'am, the first session was so good. The topic is that inauguration and introduction to the course. So given by Punya sir, it was so good. I really like the way he presented the things. The PPT was so good. I really liked it. Many pictures made me laugh and made me realize too. Next one is what I found it to be so good. The next one is creativity and innovation. That was the good one. Basically, that gave us an idea about before that I did not have any idea about how we are getting this creativity and all stuff. So I could find some comfortable things from that speech. It was so good. Then Pady Man's evaluation, setting question papers and all. It was quite good thing. It really helped us a lot. The next one, oral communication skills given by you. It was good because it's my subject actually. So it was so good, yeah. You were asking about those things. It was so good. You were asking about how to pronounce and all. It was good to see. It should be mandatory for the faculty members to improve their communication skills in many ways because we are now promoting engineers for foreign companies. Of course, they have to go abroad and work. So we have to make them good at that. So that thing was very wonderful. Apart from that, yeah, curriculum development and implementation. So that was so good, though we did not get a chance to make the curriculum of our choice. It was good. Thank you, and that's all. Hello. Good afternoon. My name is Saransh. I'm from NITTTRCHD Automation. And I've been working as a program application and program developer. So I just You are not audible, ma'am. But your voice is not audible. Your microphone is on mute. हाँ जी Actually, I've been attending from the first day, so I've attended almost all the sessions. You are a planning organization. इस माइक को छोड़ दो लैपटॉप लगा इधर से इधर हाँ जी लेकिन गुड आफ्टरनून मैम जी हाँ जी मैम मेरा नाम सारांश है आई एम फ्रॉम NITTTRCHD Automation and I've been working as a application and program developer there. So आपका सेशन थे जो creativity and innovation, planning, organization, evaluating, curriculum management, your sustainable development, oral communication skills. These were very much I can say that I think apart from our teacher as an industrialist I think I have learned a lot from these sessions and they were very much helpful.
there are many things that we need to tackle every day. For example, if we need to address to the people on the production floor. So your sessions, I think, have helped me to overcome the problems that I had been facing. So I think I'll be able to motivate them a little bit better, and I think it will help me in a long run. Thank you, ma'am. Thank you very much. Any suggestion you have to improve the quality of the program? Can you please repeat? Mr. Saraj, can you give us suggestions to improve the quality of the program? Ma'am, I think we'll be taking students with us for working on real-time projects, so that they have exposure to the industry even before they pass out. Okay. So next time when they face an interview, they'll be in a position to say that yes, I have already worked on it and I have the experience regarding this and this field. So I think if we can help with that, and we'll work with the collaboration with some institutes. Okay. We'll definitely look at it. Thank you very much. Thank you very much for the feedback. Any other member would like to speak on? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Actually, I was wrong. बोलिए सर. Hello. Hello, ma'am. Hello. Yeah, I was the previous one. Like I was talking about the feedback and all stuff. See, actually, like, I was saying curriculum development. That was not held. Actually, I was about to say management skills, but I got confused. I'm sorry for that. Huh? Okay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Any other member would like to provide the feedback? Yeah, I'm Dr. Brijesh Kumar, Director LGBGS, and the whole of the program was really very good. I made it mandatory for all the faculty members to attend it, though they were involved in invigilation as well as evaluation of the answer sheets at the same time. So as and when they were available, they were made to sit in the this program. They were made to sit in the program and attend all the sessions. And most of the sessions were good. I wanted to especially include some more sessions like conflict resolution, class management, education leadership, financial planning, and time management. So at times it happens that faculty members, especially the novice one, are not able to handle the class. So maybe some special sessions on these things can be included, which will really help them. Thank you. Thank you very much. So if GP Sampla is now connected to us, can we listen to the feedback from the teachers? Yes. Anji, so GP Sampla. Yes, ma'am. I am Manish Agarwal, coordinator of the program. The content of the course was very good. In the beginning, integration and introduction of the course by Dr. M.P. Punia was very effective, and instruction methods and case study brainstorming and seminars delivered by Dr. S.P. Bedi was very interesting, and everyone enjoyed a lot by the brainstorming techniques and how we can make it enjoyable to our students, how we can make a environment in the class. We learned a lot, and we learned management skills by Dr. M.P. Punia. It was very encouraging and guiding us. It will help a lot to manage in the class. And in the last, but not the least, the oral communication by Dr. P.K. Tulsi today was very effective. We learned how we can improve our English, our pronunciation, how we can improve our grammatical aspects, and how we can make eye contact with the students to make an effective communication. And it was very good. And but one thing I noticed is the quality of the recorded video in the seminar was poor. So we can guide our technical person to make it correct, so that the clarity of the sound must be audible to every participant, and we learn more. Thank you. Thank you very much, sir, for your feedback. Any other member would like to provide?
Hello, ma'am. I am Anjali. I'm Anjali, lecturer mathematics. Okay. Ma'am, the session was really nice, and we learned a lot. And I particularly liked yesterday's session with Mr. Amit. And especially one thing that he said yesterday was that when he was asked that he has to go through 2 years training program and how these uh, civil servants are actually molded so that they can cater to public demands and public problems. So what he said was that 5 lakhs, there are 5 lakh people who appear for this exam, and out of 5 lakh, only 500 get selected. So these 500, I mean, they have gone through a very rigid filtration program. So it's very easy because they have that very basic common sense and very high IQ. It's very easy for them to imbibe and to inculcate any situation that comes in front of them. Right. But ma'am, the situations in polytechnics and I think in ITIs is very different. Yes. And I completely agree to what he said that the students that we are getting, it's very difficult for us to mold them into a mindset of creativity and innovation. Like if I am coming up with a thing like, okay, let's do something different. Let's form a group. You people have internet access. Obviously, if the students today can access Facebook and Orchid, I'm sure they can use Google also for academic purpose. So if I'm telling them to use Google and to use library so that they can get something different apart from what I am teaching in class, and let's discuss tomorrow. Okay, if not tomorrow, I'll give you a week. But there is no outcome after that. They are ready to leave the class, but they're not ready to accept the new ways of learning. And one more thing I want to mention here, that I did B.Ed from CIE, Delhi, Central Institute of Education. So there we were told to experiment with students. And I taught students mathematics using creativity, using experiment and activity. A subject like maths is very difficult because, as you said today, ma'am, maths is also an abstract subject at times. Addition, student can visualize, subtraction they can visualize, but something like integration and differentiation is very, very difficult to visualize. So when I was teaching them, it took me a month and a half for students sitting in Delhi to change their mindset, to modify them so that they can come from that usual book sessions to the activity centered teaching and learning program. And by the time we had to leave because our section was over. But here, ma'am, we cannot experiment with the students. It's another issue because we are time bound also. Because after every 4 months we have the exams coming up. If we give too much time to a topic, we experiment with innovations, I think it's very difficult. This is all I want to say, Ram. And regarding one last thing I want to mention, that the effective speaking that we were had a session in the morning was very, very nice, ma'am. But the students, again, that we cater here, they are coming from Hindi medium school. Okay, and although they understand what we are saying, I mean, maths has no language, as I said, so they understand. But when it comes to writing part, they again face problems because they get the concept, they get the idea, but how to deliver that in the examination paper? Again, that is why they suffer. As it is, their basics are weak, and then the medium problem. So again, problem. Thank you, ma'am. Thank you very much for highlighting the practical and the difficulties, the ground realities which exist in the polytechnics. So when I'll wind up, I'll just respond to this. Any other member would like to, or I switch over to Knitter? Yes, GP Sampla. Any other member would like to provide the feedback? Hello. Anji. Good afternoon, ma'am. Manmohan.
Principal DBSCR Government Polytechnic, Good Sapla. afternoon, sir. First of all, I would like to convey my sincere thanks for organizing this training program through ICT. Trainees enjoyed all the deliveries made by you and especially by Dr. M.P. Punia, in which he delivered the inaugural lecture, brainstorming session by Dr. S.P. Bedi, oral communication skill by Dr. Tulsi, and panel discussion by the industrialist. Our trainees enjoyed this very much. Overall, it is a very inspiring, motivating, and purpose-achieving training. It is hoped that the teacher will use this learning in their real-time teaching. In future also, DBSCR is always available for organizing and imparting such type of training to any institute, not to us, in Rohtak, and will be at your disposal whenever it is required or it is planned. Other thing is that I would like to again thank NITTTR Chandigarh, Dr. M.P. Punia, Director NITTTR in absentia, Dr. S.P. Bedi, Dr. P.K. Tulsi, and the other faculty of this education department of the NITTTR, Mr. Manish Agarwal, local coordinator of DBSCR GP Sapla, Mr. Jatin Kochar for providing us the infrastructure facility and be 24-hour available with all the facilities. He is available because madam, it may be looking odd he is speaking 24-hour, but 24-hour means he is always worried that our net should work and our internet should work, and he used to check, get it checked and all that communication and whatsoever it is required for the ICT. Different polytechnics of the Rohtak. 6 polytechnics have participated in this program and 30 trainees have achieved, I think it is a big number. So I am thankful to the trainees from the different polytechnics who have taken this training. So, and in the last and not the least, I would like to thank our supporting staff who made this program a very success, as I feel. Thank you very much, sir. I think I'll now shift my focus to the faculty from Haryana and Delhi who have attended the program at NITTTR. So, any members who would like to provide the feedback? Overall, the program has been very good. As speakers and the resource persons who are invited to deliver lectures, a wide spectrum of lectures that was covered, and all the lectures we can't compare. They were excellent, they were highly motivating, they were highly informing, and all of the participants who are sitting here, they must have been greatly benefited by this program. And such programs actually they refresh the information level, interaction level of the participants, so that whenever they go back to their respective institutions, they definitely remember many things which they share with their students. And I think that if some resource persons would have been from the phonetic or say some communicative background, they must have been more benefited, because the communication skill and the related problems, they haunt the Haryana polytechnics more, because we may try our level best, but we find it a Herculean task, very difficult to make them interact with the teachers
even with their co-fellows, and not to speak of outside world. Yes. Like every step, we face the problem. True. So please, when you organize next time, so persons from the phonetic background who can give a lecture that how they can improve their speaking skills. I mean all the skill for four skills. So they that type of lectures should also be included. Okay. Thank you. Thank you very much for the feedback. Any other member would like to speak? The exposure was very good, and there's a need to implement. And Dr. Punia's lecture was very, very motivating. More the communication lecture is also very good. And ma'am's criteria for examination and paper setting and Thank you very much. कोई और बोलना चाहता है? That's it. Okay. Thank you, participants, for the feedback which you have provided. There are a number of issues which you have raised. You have given the words of appreciation for the sessions which have been engaged. We are thankful to you. And the points which have been raised, like somebody asked for more sessions on classroom management, time management, etc. So I would say this is a capsule program, induction training program, which include very diverse kind of topics. But we have a program called instructional planning, and then followed by instructional delivery, which is taking care of classroom management. So I would say that module can be offered, and you will get into what are the various skills which are required for effective classroom delivery. With respect to conflict resolution and time management, these are the topics which we normally cover in our management related programs rather than the pedagogy programs. So that is one remark I would like to give. Another, you have raised issues with respect to the quality of recorded videos and audio. We are very sorry that due to certain problems at our end, at your end also, because we try to improve our system as and when we receive certain feedback from the network centers, but we also face problems because of the non-availability of high-tech audio system and good quality computers at the network centers, whereby the quality of audio video deteriorates by the time it reaches the participant. But we are taking measures to improve upon the same, and I'm sure that the network centers would also take care of the infrastructure facilities which are needed to provide good quality video and audio to the participants. Otherwise, the effectiveness of the program gets adversely affected. I would again take up that we experiment the lady from mathematics. She raised pertinent issues which are ground realities, and we don't deny this. We all agree to what you have said. It is really sometimes very difficult to experiment with new methods because the students have been accustomed to listening to the lectures from the school days, and it is very difficult to break that habit and get them into case studies, brainstorming, cooperative learning, and so on, or give seminars. So there's a lot of hesitation on the part of the students, and you were right when you said if you ask them to come prepared, they do not come prepared, and you then can't do anything, and you have to leave your experimentation. We all agree and accept that, but with passage of time, all of us as teachers need to get into using new and innovative methods of instruction. As we have been talking yesterday, with the NBA being now would be a condition for all the technical institutions. So you have to align your instructional strategies to the graduate attributes and the learning course outcomes, which are very, very important. And there you cannot achieve these course outcomes with the help of lecture method. One has to shift to using innovative methods. And I'm very sure with passionate faculty
with sincerity and commitment, if you really go on working in the technical education system, that day will not be far off when you will be able to bring a revolution in the field of technical education and your students. These experiments have proved very fruitful. I have been to South, Bangalore, where BMS College, Hubli College, BMB College, Hubli, they have very concrete examples to prove how project work, how cooperative learning, how the case studies, role plays, they have been integrated into instructional processes, and students are immensely benefited. And there's a lot of research which has been carried out which supports this kind of conviction. So I would urge all of you to experiment and don't lose heart if the students once or twice they create problems for you or they don't come prepared. Gradually they will realize the importance of these methods because the learning is really enhanced. Another comment which we have received from the participant with respect to was that some of the sessions we received that there should be session on phonetics and phonetic expert may be invited. For the information of the house, I would like to inform that we have one full module on communication skills, and that is being done by the curriculum development department of this institute, and that is a 5-day module where we are focusing on reading, writing, listening and speaking, along with phonetic, along with how to appear in interviews, write a job resume, and how to appear in group discussion. So that is one particular module which you can opt for in future if you really want to take the benefit of that. I would like to thank the participants who have found this program motivating, inspiring, and they would like to experiment with some of these concepts and principles which they have learned during the program. There may be initial difficulties, but you can always overcome those difficulties, and certain things are within the purview of the teachers. As Dr. Bedi, while she was giving the brief what has transpired, she referred that there are many things which teachers can do, and I think teachers own the responsibility. And if we are all committed to the cause of improving learning on the level or on the part of the students, certainly I think we'll be able to bring that change with concerted effort on our part. And with these words, I have two colleagues here, Mr. Amardev and Dr. Bedi. Before we propose a vote of thanks, which I would like to do, I think I'll request them to share their experience with the audience. So over to Dr. Bedi. Yes, I will just substantiate, support what Dr. Tulsi said about the comment on incorporating experimenting with different type of methods in the classroom. I would say, you see that even at our age, change is not that welcome. So it's obvious from the student's point of view also that when you start something experimenting, they get a what has happened to the normal teaching. So slowly you introduce the change. At one go, don't introduce many of methods in that. Slowly you start doing it. Don't be discouraged even if they do not come up, because change is never welcomed at the initial stages. But looking into the benefits of all these things, they will definitely later on realize and will be with you. As I mentioned about number of things, like just going for quizzes in the last part of your sessions, you can go with that also. And don't be discouraged that the change is not coming. Don't become so much ambitious that okay, today you are trying certain new methods and tomorrow everything will be go okay. Just see that even if the iota change has come, that even that should be welcomed, that at least if you have changed out of 100 students in which you have changed only 5 or 10, you have brought some change. Rather, we also view those who have given very positive feedback to our different sessions, but I won't say that
the change will be all of a sudden. That this course is over and everything will be implemented and will go okay. But I feel that even 25% of you implement even 10% of the things, I would say the effort was worth it. So the success of what we have done, that I owe to all of you who have participated, listened to us, and will be able to make the real changes. We have just trained you, and you will be further changing the masses. That's what I say. Thank you. Thank you very much. Before I give the mic to Mr. Amardev, I'm reminded of one comment which came, which was a very valuable suggestion from one of the participants, that there ought to be some formal evaluation. So maybe the next modules which we are going to float, we will try to have a multiple choice questions which will be given to the faculty at the end of the program, and they would self-evaluate at the end to find out how much learning has actually taken place during the 5 days. That we ensure you, and we'll start this with our next module, which is scheduled in the month of July. Now over to Mr. Amardev for his experience of interacting with all the participants of the program. First of all, I thank all the participants and all the centers for being with us. A special thanks to Arun Moel ji and Narendra ji. I have personally interacted with them at TTC Jodhpur. They are also very hardworking, and I thank all the local coordinators and the principals and other guest of honors at other centers, Lingyas and Sapla, and all the participants who are senior to me in age and experience also, who are present over here, for being with us. Right. Thank you. And I just say, whatever good you can do to your students is our earning. Your technology, with the pace of technology and personal involvement, it has gone so fast that we are unable to find time for ourselves also. So we have to balance our times in such a way that instead of हम अपने साथ तो टाइम स्पेंड करना ही है, बट अगर हमें अपने स्टूडेंट्स का नाम रोल नंबर से बढ़कर थोड़ा सा उनका फैमिली बैकग्राउंड भी पता और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ वी कैन सॉल्व इट, देन ऑटोमेटिकली दे विल बिकम इंटरेस्टेड इन यू, इन टीचिंग. अगर हम उनमें इंटरेस्टेड होंगे, इट इज फॉर श्योर कि दे विल बी इंटरेस्टेड इन व्हाटएवर यू आर गोइंग टू इम्पार्ट. So this, I thank you all. Thank you very much. And we also thank Ms. Deepika and her team. Yes, वो मैं आ रही हूँ. Who are always glued to your seat. Yes. Either computer or laptop. Yes. इनको तो हम भी बहुत तंग करते हैं फोन कर करके. Yes. Without any fail. Yes. Always present. So thank you. I think, friends, we have listened to the feedback from the participants, some possible answers which we could give to the issues and problems raised. And we assure you, whatever suggestions you have given, we would like to certainly take benefit of your experience, and your suggestions would like to incorporate in our subsequent programs. At the end, I would first like to thank Dr. Brijesh Kumar and Mr. Manmohan, who were amongst us during the valedictory session of this. Also, Mr. Moel at TTC Jodhpur, who has always been supportive of the efforts put in by the Institute for Training of Technical Teachers, and he has collaborated with us for a large number of programs which have been organized through ICT. I would like to thank my co-coordinator, Dr. Bedi. She initiated this program and took care of every minute detail of the program during the 5 days, that is 15th to 19th of June. So I am thankful to her for taking up the responsibility of coordinating this program. And all the faculty members who have taken various sessions in the program, including Dr. Sunil, Mr. Amardev, Dr. Maitri Datta, Dr. Rakesh Wirtz, and I would also like to thank the external experts who were with us during the panel discussion, Mr. Amit Dhaka
and then we had panel. वो अभी मैं पैनल डिस्कशन पे रुक रही हूँ, आप मेरे से आगे जा रहे हो. So we had panelists at Lingyas and we had panelists at GP Sampla. So all the 5 panelists who were with us from the panel production ek to tha, and other 2 from other 2 organizations. So I would like to thank all the 5 panelists in the panel discussion. Then in addition to that, we had Mr. Dhaka who had interacted with you on writing research reports, and Dr. R.P. Dhaiya, who Vice Chancellor from Deenbandhu Choturam University, who has interacted with you. So in addition to that, I'll be failing in my duty if I do not extend my gratitude to all the participants who have attended this program, taken keen interest in attending the various sessions and the various tasks, and also generated discussion during the program sessions. So I am thankful to each one of them for their keen participation which they have shown during the program. And I would also like to thank the technical supporting staff at GP Sampla, at Lingyas Institute, as well as the TTC Jodhpur, and all my colleagues here, Deepika, Harjot, and Monica, and Paramjit also, who maybe in between he was coming and going. So all the technical people who have been real support for making this program a success, and all other members who have been working behind the scenes, because there are many people whom we can't see, but they have been working for the program. So my heartfelt thanks to all of them for making this program a success. And I am leaving with a note that all teachers who have gained a bit from this program would certainly like to implement some of the changes and would like to improve the quality of learning on the part of the students. And I would request, if you happen to bring some change, share your experiment with all of us so that we can give it as a role model to others, that they can also emulate your example and can experiment those things in their own settings. With these words, thank you one and all, and see you somewhere in the next or subsequent programs organized by NITTTR. Thank you. Oh, gee.